आपको सेशन का दोनों का? I, Ashwini Jindal, on behalf of Voice of CA and Chartered Accountant Association, welcome you all on this seminar. Rather, I should say that it is a first seminar initiative taken by the Voice of CA. जब से हम स्वामी रामदेव जी के पास प्रोग्राम करके आए हैं, उसके बाद हालांकि नेहा ने काफी प्रोग्राम किए हैं, मैं पहली बार इन्वॉल्व हो रहा हूँ किसी प्रोग्राम में इन दिस इवेंट, क्योंकि उसके कारण हमने प्रोग्राम थोड़े डिले कर दिए थे कि एक बार वो वाला प्रोग्राम हम कराएं। आई एम थैंकफुल टू द मेंबर्स, जो मोर देन 400 मेंबर्स एंड देयर फैमिलीज पार्टिसिपेटेड। उसमें मेंबर ही हमारे 250 से ऊपर थे, जिन्होंने स्वामी रामदेव जी के पास योगराम में, इट वाज ए गुड प्रोग्राम, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, एंड उन्होंने जो वो 7 डेज में भी नहीं देते, हमें 2 दिन में दिया, और सभी फैसिलिटीज मेंबर्स के लिए सेपरेटली एंड एनहांस्ड करके उन्होंने हमारे लिए अवेलेबल करवाई। तो ये तो था अपडेट रिगार्डिंग अदर। मैंने आप को जैसे कहा कि मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट किया हुआ है, डॉक्टर गिरीश ओझा जी को, एमएसएमई के ऊपर 15-20 मिनट के लिए वो क्वेश्चन आंसर लेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। जैसे वो ज्वाइन करते हैं, आई हैव रिक्वेस्टेड देम कि आप 3:30 बजे आ जाओ। अगर वो फ्री हो गए, उज्जैन में है एट प्रेजेंट, तो उनको भी हम साथ में लेते हैं। तो आज जो हमने प्रोग्राम रखा है, अमरजीत चोपड़ा जी को रिक्वेस्ट की थी, जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट भी हैं, और अब इनका नाम जैसे टैक्स गुरु, जीएसटी गुरु, अब ये बैंक गुरु। अब इनको बैंक गुरु की उपाधि इसलिए दी है कि इन्होंने बचा के रखना है वो ऑडिट आने वाले टाइम में, जो अभी जाता है। तो चोपड़ा जी ही बचाएंगे उसको, आरबीआई में रिप्रेजेंट करके, कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आज हमने ये फर्स्ट प्रोग्राम इसलिए रखा है ताकि मेंबरों को, मैंने इसमें एक एक चीज लिखी है कि उनके लिए भी जरूरी है, जिन जो लक्की हैं, जिनको ऑडिट आ जाएगा, जहां ऑलरेडी पैनल में है, और उनके लिए ज्यादा लकी, उनके लिए ज्यादा जरूरी है जो कंकरेंट ऑडिट कर रहे हैं, क्योंकि कंकरेंट ऑडिट में भी यही चीजें हमें क्वालिटी देनी पड़ेगी। अदरवाइज जो आज हम रो रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, 10 साल बाद या 5 साल बाद कंकरेंट के लिए रोएंगे, क्योंकि कंकरेंट ऑडिट में भी वो चाहे सीबीएसई कमांड्स हो, चाहे वो ऑडिट एडवांसेस का जो चोपड़ा जी, जहाँ लफार में से जो पॉइंट हमने कैश के लेने हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट के लेने हैं, कुछ भी लेना है, तो हर चीज इंप्लीमेंटेड है कंकरेंट ऑडिट में भी। तो दोनों के लिए ये यूजफुल है, ताकि मैंने मेंबरों को यही रिक्वेस्ट की है कि ये सभी के लिए यूजफुल है कि काइंडली आप इसको अटेंड करें। अगर इवन दो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं हो तब भी करें। तो मैं चोपड़ा जी से 2 मिनट के ओपनिंग रिमार्क्स लेके देन आई विल स्टार्ट विद कुंतल पी शाह। जैसे मैंने रिक्वेस्ट की है चोपड़ा साहब को भी कि कुंतल जी ने 3:30 बजे निकलना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चोपड़ा जी ओपनिंग रिमार्क्स दें। तो कुंतल जी से शुरू करें सर। थैंक यू अश्विनी जी, एंड थैंक यू कुंतल भाई। और मैं राम बंसल जी को देख पा रहा हूँ यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स I must greet all the participants who are there right now. अश्विनी जी ने कुछ बात कही कि बैंक ऑडिट गुरु इसलिए क्योंकि ये बचा पाएंगे ऑडिट को। ऑडिट को मैं नहीं बचा पाऊंगा। ऑडिट को तो बचाना होगा तो या इंस्टीट्यूट बचाएगी या हम लोगों का काम बचाएगा। मेरे ख्याल में अश्विनी जी को मालूम है, मैं तो जब से बैंक ऑडिट सेमिनार्स पे बोल रहा हूँ, आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग वेरी क्लियरली कि अगर हम इम्प्रूव अपनी वर्किंग नहीं करेंगे तो ये बैंक ऑडिट नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये है कि वंस द एंटायर थिंग बिकम्स ऑन सीबीएस और सारा कुछ अगर आपका आईटी पे है, तो नेचुरली बैंक्स ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की हैं इन सिस्टम्स में। दे विल लाइक टू मेक यूज ऑफ दोज, एंड प्रॉब्ली इन द प्राइवेट सेक्टर our own members who are the auditors have not been insisting for the branch audit. That has been an unfortunate situation to be in. So वो उस बात का फायदा शायद बैंकिंग सेक्टर जो है वो उठाना चाहता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ब्रांच ऑडिट जरूरी नहीं है तो why it should be required in the public sector banks also, क्योंकि पब्लिक का डिपॉजिट वहां पे भी है, पब्लिक का डिपॉजिट यहाँ पे भी है। जब हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अकाउंट्स एनपीए यहाँ पे भी हुए, अकाउंट्स एनपीए वहां पे भी हुए। मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट सबसे है कि हैव एन इथिकल कंडक्ट, हैव ए कॉम्पिटेंट कंडक्ट, और हम जितनी क्वालिटी बेहतर दे पाएंगे। अब कई बार मैं बोलता हूँ भाई हम एमओसी नहीं देते हैं, तो लोग कहते हैं जी अगर एमओसी होगा नहीं तो देंगे कहाँ से।
मेरा अपना मानना यह है कि देखिए, हम इस प्ली में अगर लगे रहेंगे कि एमओसी होगा नहीं तो देंगे कहां से। अगर आप कोई भी ब्रांच करोगे, इतना तो एरिया है कि कोई ना कोई एमओसी आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ये कहो जी कि कुछ भी नहीं मिला, तो फिर तो वो गवर्नमेंट ही बोलेगी कि फिर ब्रांच ऑडिट की जरूरत नहीं है। सच्ची बात तो यही है। तो मैं आज ज्यादा इस पे बातचीत नहीं करूंगा अभी ओपनिंग रिमार्क्स में। सिर्फ ये कहूंगा कि ये ब्रांच ऑडिट, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो अश्विनी जी ने बोला कि ये इसलिए भी जरूरी है कि कॉन्करेंट ऑडिट में भी इसका इम्पैक्ट है। जो कुंतल साहब बताएंगे उसका इम्पैक्ट कॉन्करेंट में भी है, जो मैं बताऊंगा उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कॉन्करेंट ऑडिट में भी है। इसमें कोई किसी तरीके का क्वेश्चन दे रहे। तो हमें अगर अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, अगर हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में सेटबैक मिलते रहेंगे। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन इट। आई डोंट वांट टू से व्हाट वी हैव बीन डूइंग, व्हाट वी हैव नॉट बीन डूइंग। आई ओनली वांट टू से व्हाट वी शुड डू। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फ्यूचर इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट हैज बीन द पास्ट। पास्ट को आप अगर देखते रहोगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो पास्ट के अगर कुछ गुड एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ गुड मेमोरीज हैं, उनके साथ फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए जो आप कर सकते हैं उसको करिए। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच अश्विनी। थैंक यू सर। अगर कंफ्यूजन हुई हो मेरे पार्ट पे तो मैंने नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं कोई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे कुंतल पी शाह जी हैं, जलंधर में फिजिकली भी, व्हेन आई वाज द चेयरमैन इन 2014 15, he has visited our branch and most sought after speaker, क्योंकि ये अहमदाबाद से हैं कुंतल भाई, और ही इज एक्सपर्ट ऑन द सीबीएस कमांड्स। बास्ट में जो कमांड्स यूज होती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो मतलब यूज होते हैं इन बैंकिंग, he is master not only in the command as well as how to conduct the bank audit, effectively conduct the bank audit. I will request Kuntal भी शाह जी, क्योंकि इनके पास आज टाइम कम है, तो काइंडली स्टार्ट स्ट्रेट वे स्टार्ट विद द प्रोग्राम सर। Uh, Good afternoon. Thanks a lot, Amarjit sir, for kind words. And it is indeed a pleasure to be part of this Voice of CA program. Ashwini ji, I'll require the right for screen sharing. Oh, sorry sir, just a minute. Yeah. Just a minute sir, sorry. Sir, It is indeed kindly try sir. yeah. Just a It minute. is indeed that it's this particular session would not be only with respect to or from the perspective of a statutory bank branch audit. It is equally important from concurrent audit as well. With the given amount of time today that we can deliberate on to, what I'll do is I'll not be in a position to take this entire presentation, but I'll select certain portion where if system is perfectly in order, then there are certain set of people, users, or certain transaction uh, which are leading to system to behave in a specific manner which is not befitting with the rules and regulations, or if there are certain set of errors which may create problem of in system identifying the account as in proper class asset as an NPA or proper classification. So what we'll do is we'll quickly go through certain aspects. uh, I'll also add that before adding any absolute assurance from our side as an auditor, we need to first think it over whether we have carried out audit in a proper manner and a requisite manner. So I've seen, sorry to say, but I have seen some members who are writing simply yes, no, not applicable in LFARs, where if you read the question, it can never be answered in yes, no, or not applicable. We are giving an absolute assurance whichever side whenever we are saying yes or not applicable. Please understand the question, understand the background work that is required to be carried out, and then carry out that work and thereafter give an assurance or any kind of observation, without which it will be very difficult, even in case some case is selected for further review by regulator, it will be very difficult for all of us to justify certain actions. So the weakest link that we generally find and a lot of members do ask is that how to carry out. We don't have much of a support available from a system side. So I have tried this time that I'll have a presentation on a flow of an LFAR. I'll not touch upon the LFAR in detail, only the flow I'm using of an LFAR. However, how to carry out an audit through the system on the flow of an LFAR. In that, I'll
touch upon certain important aspects and certain aspects where manipulations are happening at a very large scale, right? In various banks during my audit and the audit of some of my colleagues have observed. So we can make those points and how to have audit process strengthened, right? So that's what would be the goal for today's this one. Let's start with this one. So that's in a 4-part. We'll be dealing on a certain part only today. Audit activity through CBS, that is LFAR sequencing. Automated asset classification, that's RBI guidelines. Important CBS parameters for NPI identification. There will be few of the points that I'll say that please review it in detail before giving an absolute assurance in LFAR or through a certificate. And case studies. Let's start with this. I'll explain you how this structure of this presentation from now on. The slide that you are all seeing on screen is made up of various parts. Actually, it from the right from the title point, that is, we are now on an asset, we are on a cash, and the number in parentheses means there will be some more slides to come under the same topic. This is the bold text is the LFAR requirement. Now these are suggested audit checkpoint only from system perspective. So don't mix up that way that I am giving you an 100% checkpoints for LFAR. LFAR, you'll have all your audit processes or audit checkpoints. I am asking you to add certain checkpoints from the system perspective. And the next slide would be the system support, that from where or which are the menu codes which are useful for that particular audit checkpoint. So likewise, we'll go further. I'll select few of the items. To start with this, I'll have one of first slide, and thereafter I'll take some important ones. I'll also like to have question and answer as well from system perspective. If whatever questions are there to any of the member, you can post it onto Q&A or chat box. I'll take up that as well, and within the time frame, we'll be in a position to gain certain aspects. Okay, let's start with the first. The first point that wanted to discuss is the simple one. Have the cash balances at the branch ATMs have been checked at periodical interval as per the procedure prescribed by the controlling authorities. That's the query. Now you need to review two aspects. One, in any case, we'll be reviewing cash and while we'll have our audit, and that will be reporting in first part, not in this, but the prior point. And this point, we are checking that, let's say there was a particular day when the controlling authority return was required to be filed, the balance was 1 lakh rupees, whereas the reporting was done on 85,000 rupees or something. So what is basically what we are looking for? This is only an aspect of an LFR. What we are looking for is the daily balances and the transaction into certain set of accounts. So which are the useful commands from various systems. So we are now end up with this one. Finacle 7, Finacle 10, Banks and FlexCube. There are predominantly 3 systems, Finacle, Banks and FlexCube. Finacle is having 2 active versions, Finacle 7 and 10. However, Finacle 7 is almost on a phase out mode. Very less number of banks would have now Finacle 7 because Finacle 10 is the latest version. Now even 11 is also in pipeline. So the important point we need to understand is this. We all use Tally. In Tally, we have a command called DAL, Display Account Ledger, where we verify the account ledgers. The same way we verify in the system, that is, let's say in Finacle to ACLI, and that's a common command for all type of accounts, be it a loan account, FD account, current account, savings account, any type of account. That's the command that is required to be used. For Finacle 10, I would suggest to use though there are 2 commands, I would suggest HACL INQ. That gives a detailed information rather as compared with HACLI, which gives a compressed information or the very limited information. So you can use HACL INQ. In case of cash-related reports under TCS banks, there are various reports available. Now, this, let's say ACLI, HACLI are short codes for menus in system. Such kind of short codes are also there in TCS banks, but these are in numeric. So 710 or 580 or kind of, but that's not that's difficult to be remembered. So that's why what I have done is I kept this entire flow that in the main tree you need to go to the reports, then go to the cash related reports, and then press view cash summary. That's one of the type of cash report. There are various type of reports available under this codes.
In FlexCube, you have right from chart of accounts to the balances, you have this codes available. Now here I want to clarify certain things. I would suggest you some of the command. It may so happen that these commands are not enabled or not accessible to us as an auditor. If it is not available at all, or if the bank is not using that, we can't do anything. We need to search for some other alternative process. If it is not accessible, then we need to check it through the person on the bank who has an authorization. At the same time, you request the bank to provide you an adequate authorization to access that command. Secondly, don't consider this presentation as 100% information. I have tried to take you all along a step further. That is, or I'll say that the first step I have helping you to take first step, but the rest of the journey that you need to carry out with all the facts and your situation. It may so happen that I might have missed some command, other customization. Then I would suggest you to, you can have, I'll share it, this presentation with Ashwini ji, and he'll in turn will share it with all participant or all those who have attended. So in that case, what we can do is that you can take a print of this one. You can create your own audit manual. It is very important now how you carry out audit. See, many of the time we carry out audit with all diligent this one. However, we don't record. We don't have any document available with us that we have carried out this work and this is how we have carried on. This is how we have came to the conclusion. Irrespective of the fact that you have carried out perfect audit, but if you don't have a documentation, it will be a very difficult situation in case of a problem arises into this. So prepare an exhaustive audit manual, that is first, that is form of an audit plan. Then execute it and record all the information. If you don't have a screenshot, if you can't take a screenshot, if you can't have a report, at least mention in Excel step by step what you have carried out, what's the result that was there on the screen, and what is your comment onto it, and how you have completed that part. In case of an LFAR, what I would suggest is start with a blank LFAR, prepare your audit manual, normal audit checklist, and you can add up this checklist checkpoints of system as well. And that becomes an exhaustive manual. And the next column, you can have which documents you have taken as an audit work paper, likewise. So that is what from my side. From system side, I'll now focus only on system side. That's normal. This is ATM. Now ATM, let me share some things. Recently, again, same set of frauds are happening in ATM replenishment and ATM updation. Now, I call ATM as the most dumb machine ever, because there are two events while handling cash through an ATM. One is replenishment, other one is the withdrawal. Now, ATM computes the cash, that is cash only at the time of payment. The updation in this ATM for cash that was replenished is required to be done manually. So let's assume that I have replenished cash of 1 lakh, but I am updating in the system that is in switch that I have replenished 10 lakh of rupees. Now the problem will arise when the system throws that the ATM is getting drier, and the switch balance shows there is a balance of, let's say, about 9 lakh rupees. So at that point of time, the head office or the person who is monitoring ATMs across the system would be in a position to identify there is something wrong with this. However, if someone is doing it on a smaller scale, that is, let's say, replenished 1 lakh rupees and updated as 1,25,000 rupees, there are lesser chances to get caught with this review. So point is, we need to first ascertain which type of ATM the branch is having. ATMs are of two types, that is off-site ATM and an on-site ATM. Off-site is generally not serviced by the branch. You need to focus on the ATM which are serviced by the branch, where the branch has GL code as well as servicing is done by the branch, where you can have your branch would have an access to an ATM, and that ATM would have servicing part, wherein once you go into an ATM along with the branch of it, because you need to verify the cash at the ATM as well. So first thing is that they'll put it on an admin mode, and then they'll generate a switch report. Switch report will show, let's say, balance of, yeah. Gauravji, can you mute?
Yeah, thanks. So switch report will provide you a cash balance that is, let's say, 1 lakh rupees. The second report that the person would generate is a cassette-wise report. Now, cassette-wise report will have, let's say, numbers. So first cassette is having 40 number, second cassette is having 100 numbers. So once you open a cassette, cassette by cassette review is required to be carried out. Once you open a cassette, you'll find that 500 notes, 40 is the number. Same with second cassette, third cassette, fourth cassette. The physical balance, that is you actually verify, must agree with the switch balance. That is first checkpoint. The switch balance must agree with the GL balance. Now, it may so happen that there is a difference between, now, sorry, I forgotten to add one more point. There is an overage bin as well into the ATM machine, where for some reason, technical or any, the cash could not be dispensed with, will go into an overage bin and not in a cassette once again. Cassette loading can be done only manual through manual mode. So in that scenario, overage bin is also required to be added. Now, your cash is not, let's say, matching with switch. There is first point. That's first observation. Your cash is not matching with the GL as well. That's the second point. And the switch is not matching with the GL. That's the third point. So have an holistic review of this one. As far as C is required to be reviewed from account ledger inquiry from CBS system, where the GL is maintained under the branch GL. So first and the foremost thing, when you start with the branch, just verify that which are the type of balances that we have in the branch. So in cash, you'll have different balances, type of balances as well. And based on that, you carry out your audit processes. So that's again a ledger inquiry only. So I'm not going much onto this one. Then comes the balance with RBI and SBI. Now, very less number of branches would have this external balances. However, these accounts, so we need to understand what are the problems with these accounts or the risk associated with this. Assuming that a bank is there, let's say South Indian Bank. South Indian Bank has an account with SBI, because South Indian Bank would not have, let's say, facility branches in Punjab. Now, what happens is, let's say some customer of South Indian Bank would like to have some facility there in Punjab by getting a DD or a check. So South Indian Bank is having a balance check with. Hello, sir. Is there any issue from my side? थोड़ा सा आया था जी, हो गया ओके है. Yeah, because I'm. Yeah, sorry. I'll once again do that. I am on a Wi-Fi at Coimbatore branch, so I don't have any control over it. So South Indian Bank is having account with SBI. Now that account will have a mirror account in our system, that is in CBS. In a South Indian Bank's branch, will have a mirror account with State Bank of India, whereas State Bank in its system will have an account of South Indian Bank as a normal customer. Now the problem is these two accounts are not linked. The transactions carried out in State Bank account, of South Indian Bank is completely a different one, whereas this one mirror account would also be a different one. Now, during one of my audit, I observed this, and that's why I always ask all members to also review those kind of things. We have observed that in one of the case where mirror account was not debited, whereas my actual funds went out from State Bank balance. This actually happened, and it was a persistent one for about 6 to 8 months. Now, meaning thereby the branch was not carrying out monthly reconciliation process properly as well. So that was first observation. The second observation was, if my mirror account is not having an impact or any transaction, meaning thereby my customer was also not debited. So at that point of time, we realized that there is a huge gap or risk associated with this, and this account are generally or maybe used for generation of fictitious credit as well, or for generation of fictitious turnover into save an account, or that is a CC account turning into an NPA. So I'll give an example that the fundamental aspect of system is that system, let's say, assume that we are assuming
The system is perfectly fine, working fine. However, there are a set of people who are gaming the system. There may be, there may not be. So I don't want to blame anyone, nor I want to say anything, but there may be. So as an auditor, we always see to it whether there is a potentiality or not, and then we carry out audit from that perspective as well. Now, I was referring to an event that had happened in London few years before. A person took out a cart with 100 mobile phones with Google Map on, and this was an empty lane, whereas the Google Map showed that's a heavy traffic jam, 100 cars are plying there, and that is a lot of cars, and they are going on a very slow speed. So let's understand this. The system is perfect, but someone, that fellow, actually tried to game the system. Now, in that case, what will happen if someone tries the properly implemented system and try to game the system? Now, that creates a lot of problem because there are manual interventions as well. Now, it may so happen that it might be an intentional, that might be an unintentional, but the impact or the aftermath is a very difficult one. So I am not even going on a fraud right now, but even a simplest mistake also would have a problem or an impact. Whether it was done with an intention, without intention, is a subsequent part. But as an audit process, my audit program should contain certain set of checkpoints to cover majority of the events, to ensure that the transactions or the system is not impaired with any of these impurities. So that's what we'll be looking into. So in this case, again, we need to check not only the closing year-end balances, we also need to check for the intervening transactions as well. So verify that, the same command. I would suggest, if there are very less number of transactions, just verify all transactions, and that would be the better one. But at least don't forget to carry out review for an intervening period as well. Now, this is where this entire updation to LFAR happened. From this point, major changes have taken place 2 to 3 years back. What is required now is they consider that review of large advances and other reviews. Review of large advances would require a detailed transaction review, whereas the other would require control testing. The problem is to ascertain first which are the large advances. So where the outstanding amount is greater than 10% of aggregate balance of fund and non-fund base. Now, fund-based balance we would all have that, because in the balance sheet we will be immediately verifying the fund base, right, for other purposes as well. At the same time, for non-fund base, we need to see to it into the balance sheet for the contingent liability on account of LC, BG, co-acceptances, etc. When you total it up, let's take an example. 500 crore is my fund base, 300 crores my non-fund base. So my denominator becomes 800 crores. Now comes my identification part. So I have now the denominator, but the numerator side. Generally, what happens is advances report we all get. Now that advances report would have all funded advances exposure, customer-wise exposure details. The problem is with non-funded exposure, that is guaranteed report, LC report. So what I would suggest, if they can, if not on first, if they can, if not immediately on second. Yep. Yeah. So immediately on second, the report should be there. So that what will happen is, yes, sir, I think there is an issue with network. I've switched off my video for that reason. So on second, let's at least get that report generated. Now, what we need to do is we need to create a pivot of LC report, BG report, and funded report. So 3 report would be there and 3 pivot result would be there. Just compile those pivot and create a pivot of pivot so that you can get customer-wise funded and non-funded advances detailed. That is total advance detail. And now you have a numerator and you divide it by the denominator, that is 800 crores. Please ensure that you select all accounts which are eligible or required to be selected as a large advance, right? So that there are no issues in terms of
mismatch between the accounts which are required to be audited and accounts were actually selected for audit. In this LFAR, you need to mention all the accounts you have verified. So gone are the days where you used to hide behind the sample sheets, right? So you need to say that which are the accounts that you have verified. So numbers are also required to be mentioned therein. So no report will be available for this particular aspect. We need to carry out activity certain step by step. I have mentioned all step-wise details therein. Then comes the credit appraisal renewal of limit. The renewal of limit, IRACP is now very clear in terms of renewal of limit, where 180 days is provided. Only thing is that again, there have been various instances observed wherein 180 days is also circumvented with updation of date of review or a short review as a date of renewal. So actually renewal was not carried out. However, the review, the short review or an abridged review that was carried out was updated as renewal date. Now, what will happen is system will consider that as a renewal date and system will assume that the renewal is carried out and system will not work on to 180 days aspect. So first and the foremost thing, we need to check whether wherever there is a date of renewal, in our sample at least, whether the renewal has actually taken place or not. That is first. In case the second part, that the renewal has not taken place, whether any account which is there where the renewal is outstanding for more than 180 days. I'm not referring to any review. Review can be, let's assume that bank has carried out one review, two review, whatever. But 180 days is 180 days. So what we need to do in this case is this. We need to go through the account master. Now, once we go into an account master, we need to check all these details, whether updated or not. And the problem here lies is that, let's say the 180 days is appearing on 14th of January. Now, 14th of January being an holiday, someone in the bank had updated on 31st of January, the date of renewal is 13th, 1313. Now, what will happen is, when you see now in the month of March, you will find that the date of renewal is 13th, but it was updated on 31st of March. However, we don't have the timestamp immediately available through a menu code. There is a menu code in Finacle. There is called AFI, Audit File Inquiry, where the timestamp, date stamp, and user stamp is also available, but it is a bit technical in nature. Why I actually want to have this many things? Reason being, if whether my system is functioning in order in terms of IRACP provisions or not, because that's where the automation part lies. And in LFAR, it is required to be mentioned that whether the system is identifying and classifying the account as proper asset classification as per IRACP provision without manual intervention. Now, manual intervention would not, according to my opinion, manual intervention would only be those cases where substandard asset was removed and standard was mentioned therein. No. If you try indirectly as well to ensure that the system behaves in such a manner which is not a correct one, that also is part of the manual intervention. So in this case, account master, that is ACI, HACI, and in case of TCS banks, deposit CCOD account, and that is the inquiry part, that is an account master. In case of a FlexCube, there are attribute inquiry, that is parameter inquiry. Then comes the limit. Now, this is where some more set of games that are being played. Now, let's understand the case. In case of an IRAC provision for CCOD accounts, one of the limbs says that if my account is within the limit and within there is no credit turnover, or my account is more than my account balance is more than the limit continuously for 90 days last running day basis, then the account will turn into NPA. Now, in case of this case, what will happen is that, let's say I am having an DP of 100. Since last 89 days, I am continuously in excess of 100, and let's say the balance is 105. So what will happen is that if 90th day end of day process is run with 105 with 100 DP, system will classify my account as an NPA. However, if someone changes this limit into the system
From 100 to 125, on 90th day, system will ask a question whether 125, that is the account limit, is greater than this account balance. It will say yes, meaning thereby balance is within the limit. In that case, there is no overdue. If there is no overdue since last 90 days, there is no overdue, then there are no issues at all. Now the limit is restored back on the next day or some days after, and account will again have the same set of problem. Point is this: I don't want to say that anyone is doing it or whether in your branch whether someone has done it or not. I am more concerned on my audit process, whether my audit process contains checkpoints where I need to verify these aspects. So I would always suggest that whichever accounts you select for sample, verify that whether there is any change in the limit, that is the limit history. If there are changes in the limit history, verify that whether there are sanction documents available for the changes in the history or limit or not. If there are no document, also mention under the sanctioning and appraisal and other part wherever it is touching upon. But at the same time, review whether it has impacted my asset classification. If yes, mention it in your LFR as well as through MOC mode. So the command that are useful here is ACL-HM, account limit history maintenance. Very good command. Only limitation in this command is that you cannot have period specific report. That is, if I want to say that I want to have data from 1st of April to 31st of March, changes in all accounts or change of limit in all accounts, I'll not be in a position to get it through ACL-HM. ACL-HM is an account specific one, and where you need to run it through twice. That is one for SL, one for DP. The systems are configured in such a way that the least of SL and DP would be the limit, effective limit. Same way in TCS banks, we have a limit history under interest rate history. Though the name is interest rate history, but it also has limit history as a drop from a drop down menu as well. And the FlexCube CH409 for OD limit history as well. So please make sure that we verify this part. Then I'm just keeping certain part. Now interest rate. Interest rate, there are two aspects: whether interest rate, correctness of interest rate, and secondly, updation of interest rate for MCLR, that is reference rate based loans, EBLR, external benchmark lending rate loans. Interest rate, we need to understand this. The rate can be set up in two manner, that is static interest as well as reference rate interest. Now reference rate interest would be through the table, whereas static rate, I'll be mentioning, let's say my loan is MCLR plus 2, and for a example purpose, let's understand MCLR is 8, so my loan would be 10. Now I can mention 1010 into interest rate, that is a static interest. It won't have an impact whenever there is a changes in interest. That is a normal that we all are aware of. Now, in case of interest table can also be of two types. One, that only basic table is required to be selected, that is MCLR table, and there is a space available for updation of spread. Or there is another specific table, let's say for our loan, it is MCLR plus 2%, then we need to select that appropriate table, MCLR plus 2. Now that derives the rate based on the value in the MCLR table. Now, what we need to understand is that how many changes have occurred during the year under an MCLR, or if there are any base rate loan on the base rate, or whatever are the reference rates that are there, the loans. Now, once we have that, we also need to see to it whether the system is getting updated for the rates on a periodicity that is mentioned for the particular loan. Now, what will happen is that whether correctness of interest rate, that is first part, and second part is on an MCLR and an EBLR loan. So what we need to check is, like we check the history of this master, that is limit master. In this case, we need to check the history of interest table master maintenance or master updation. Now there are two commands, that is one in Finacle, one in banks, that is INTTM or INTTI, and in TCS banks interest rate history. But there is a stark difference between the two. When I say that INTTM will only have those information where there is a change in the interest table code.
Right. So MCLR plus 2 table was changed to MCLR 1 table. Then only it will have an impact entry therein. Whereas in TCS Bank, you will have entry for all changes, including changes in MCLR rate. So let's say MCLR got changed from 8 to 9%. So effective rate would be 11. So that change would also appear into this TCS Bank's interest rate history. That's the major difference between these two. Then this is what I was referring to. In case of an EBLR, first certain are there any accounts with external benchmarking rate? If at all there are any, then you need to first ascertain which are the external benchmark rates used. Secondly, the changes of the external benchmarks during the year, and then you need to check whether the rates are properly updated for those EBLR loans. One more interest-related report, if you are finding it difficult to ascertain through INTTM, I would suggest you can use a command called AINT-RPT, or in case of Finacle 10, you can use HINT-RPT, or there is one more command known as HINT-PRF. Now, what happens is this gives you a complete interest breakup of all this entire period that you give. It also has an option that whether you want a penal interest computation or not. You want to compute the normal interest, you can compute interest for NPA account, you can compute interest for closed account as well. So the report is available in AINT-RPT. In case of TCS Bank, we need to call for the product sheets. Product sheets are actually detailed computation of interest. In case of Flexcube, LN801 loan interest report is there, and even an inquiry is also available through LN022. Not going into detail into this. Yeah, this is one case. Recently, in one of the leading private sector bank, a fraud has happened. Not name the bank, but that bank had a lot of put a lot of pressure onto the branch manager and other salesperson to get a business. So one branch manager actually took it otherwise, and he started misusing normal fixed deposit, which are not lien mark deposits, to create overdraft account against those fixed deposits, where the fixed deposits were lying with the customers at their home. So in that scenario, what happened was they created bogus overdraft account against fixed deposit. From that overdraft account, they once again created FD, or they transferred money to some new kind of accounts, new accounts. So they were actually manipulating the number of accounts as well as targets for FD and this overdrafts. Now, someone actually got whiff of this, and that person was blackmailing the branch manager. As per the FIR, 2 crore rupees were paid as hush money to this blackmailer. So just you can imagine the magnitude of fraud. Now, the fraud will happen, right? I'll not say that even with a vigilant audit, the fraud would happen, because if the users are determined that they want to do certain things which are not proper. My perspective from that incident is this: I just revisited my audit process. By and large, we consider loans against deposit or overdraft against deposit as a low risk product, and we select sample, just random sample, just 2 sample, 3 sample from the file that they provide. I would suggest that let's now desist with that practice, if at all we are following, and select the sample from system. That is, when we have an advance sheet available with us, we'll have all list of accounts. From that list of account, let's select the sample. Now, sample would be, I'm just giving an idea, it's not necessary it should be that way, that you select in Excel that how many accounts are there where the complete OD limit is utilized. So select 1 or 2 sample. Where no limit is utilized, or when you can say the newly opened accounts, kind of, right? So these are one of the these are few of the aspects. Whichever mechanism you deploy to select sample, mention that against that sample, that this account was selected based on this method, or my this perception, or my this review mechanism.
So that will actually help you out in case after 6 months someone is asking you why you have selected this account and not this account. You can say that I have created my audit plan to ensure to include samples from various type, and these were the type and this was selected. So at least you can show that how the sampling was done, so that we can eliminate a portion of risk of missing it out, right? If you have selected from files, these account would not have, let's say, documents, right, and will have a problem. So from selecting from system data, it will at least have some chance. It's not necessary that you will be in a position to get those. Now then comes the actual part, whether lean marking is carried out properly or not. So I would suggest that have a review process designed in such a way that lean marking is done on a physical fixed deposit receipt or an advice, as well as in the system. System is very important. If lean marking is not there in the system, it will have a major impact. So for that, we need to check the lean master. Now, lean master is available, accessible through ALM or HALM in Finacle, or in case of TCS banks, it is through collateral inquiry. Please review that whether the lien is applied into this or not. There is one more method to verify this. You can go to the account and account master. You can mention FD account number, and you can see available balance under the FD. So that also screen also will show you that whether there is any lien marking onto this account or not. But the best way is to review it through ALM, because it gives you corresponding information about against which facility the lien is marked. Stock and book debt statement and DP computation, I will not touch upon this, but one of the aspect from system perspective, I will take it at the end. You can just understand this part from where we can verify. That's this. The important issues I will take up at the later part. SRM, that is security register maintenance. CLL is collateral maintenance. HCLM is for collateral maintenance. Now, it may so happen SRM might not work in few of the bank systems. Then you can use HCLM. If HCLM is not accessible, you can use CLL. CLL and HCLM is only mirror image. Same is Finacle 10. In case of TCS Bank, the security summary and FlexCube, limit collateral and other inquiry. BA 433 and 434 is vice versa report. I'm just, yep, this is the one, according to me, is a very difficult part in LFAR, where we may end up giving an absolute assurance, and we may not be even aware of that we have given an absolute assurance for this one. The question is, has the branch identified and classified advances into standard, substandard, doubtful loss through the computer system without manual intervention? Is this identification classification in line with the norms prescribed by Reserve Bank of India? Now, the single sentence or other two sentences requires us to review all the conditions under IRACP, that is income recognition, asset classification and provisioning direction, and whether the same is automized and getting operated without manual intervention. Now, it looks very simple in terms of a single sentence, but if you go through in detail IRACP, there are various conditions, various events where an account can be downgraded, account can be upgraded, or provisioning is required, accelerated provisioning is required, revenue to be derecognized, revenue to be recognized. Can you mention as a branch, can you mention or provide an absolute assurance here without verifying in detail? In detail, I don't want to say that even more samples. I want to say that covering all aspect or eventuality. An attempt is made this time in guidance note, CBS chapter, Annexure A, where a dissection of an entire IRACP is carried out, and how to verify and which are the useful reports for that. You may refer that part in 2024 guidance note. I would suggest that please review it at least in certain important aspect. Let's say, I'll tell you, if you mention, yes, everything is perfectly in order, but the bank is not issuing credit card, and you are not mentioning that there is no credit card product, so we are not in a position to confirm or review the credit card part. Then comes the agree part. Now, whether the banks have a system whereby even agree loan is also getting
identified automatically based on the crop loans? Now that is a $1 million question. Now, if that is done through a manual or some other mode, which might not be suitable, or which might not be said to be of automized system, we need to have a mention. Now, assuming that I am doing an audit of a city branch where there is no this crop loans or an agri loan, so I need to mention categorically that we have not verified for those crop loans, because there are no accounts to verify, or there are no loans to these type of things. Meaning, thereby, I would suggest, again, this is my personal opinion, don't give an absolute assurance where the activity is not carried out or it's not applicable. So this is where I'll take to the second part of this presentation as well. Now, these are few of the manual intervention and impact of it based on advances where it can impact. Same way is the case with SMA. In one of the bank, though it was a very small bank, I observed this, that bank CBS was not having SMA coding at all. But when you review certain set of reports, you will find that yes, there are SMA codes available. So I just routinely inquired, sir, if your system is not having SMA code, how come the report would have SMA codes? So they said, we have embedded a logic in the reporting system that if this kind of event are there, you just assign some code. So that's something which is not at all what is expected by the regulator through the circular 14th of September 2020 circular. So please understand that whether CBS is used as a main and a focal system, and whether the same is operating as per IRSCP. Many of the members would say that we are a branch auditor. Many of the things happen at the central level. I can understand, but this is what the branch LFAR states. So at least we need to mention that if at all bank has stated that certain aspects they would be taking care at the head office level, you can take help of that, and you can mention that way that your instruction, that the closing instruction or the auditor's instruction states this one. Right. So that's this part. Interchangeability. Now, whether to call it window dressing, evergreening, I don't know. You name it. The problem, you need to first understand what's the problem and how to carry out through the system. Interchangeability. Now, this point refers to interchangeability between fund-based and non-fund-based facility was allowed subsequent to devolvement of LC and invocation of BG. Now, let's take an example. There is a customer who has a facility of 500 rupees in funded and 300 in non-funded. He has used this to the brim, that is in funded 500 entire amount he has used. In 300 also he has used entire amount. The sanction letter states that you can have an interchangeability of limit of some amount or some percentage between funded and non-funded. Now what happens is one of the guarantee of 50 rupees is invoked. Now what happens is the moment there is an invocation of a guarantee, the funded non-funded exposure would be crystallized to the funded this part. So it will go from non-funded exposure, it will move to the funded part. So in this scenario, what will happen is that your non-funded against 300, now you have 250 outstanding, because 50 is now going to get added into 500. So funded would become 550, non-funded would now become 250, and that's how 800. But your funded limit is only 500. As against that, if you do a 550, that's an overdue. To overcome this, some of the banks actually resorted to invoking that interchangeability at that point of time, where they stated that now the 50 rupees is available in non-funded, let's convert it into unfunded. So now what they have done is they have now stated that now the available limit under non-funded would be 250 and the available limit under funded would be 550. So now there is no overdue at all. What RBI has stated is, are there any instances? Now I am keeping it open now whether to consider this as an evergreening or NPA. Now you can take a call. At least this information is required to be updated. Chopra sir will also probably touch upon this part, whether to consider this as an NPN or if at all
under which provision or under which shelter the auditor can report it in that way. But this is what is actually was going on since long in banks, and now it is part of LFAR itself. Now, how to verify? That's an important part for us from a system perspective. What I would suggest is obtain a report from bank, that is branch, for BG invocations and development of LC. Now there is in Finacle you can generate it through GI, that is a command, or HGI in Finacle 10. In case of this letter of credit, the command is DCQRY, documentary credit query. Right. In TCS banks, that's and trade finance menu is a separate menu. We need to take help of bank because they'll have different customizations available there. What we need to do is we need to generate this report, identify the set of customers who have this invocation of bank guarantee and development of LC, and through an ACL HM, that is the changes in the limit. You just see to it, are there any changes into these customers, and whether the change is post to the invocation or the development, and what's the impact thereon. Right. So that will actually give us this particular point, some reporting this one. Now these are office accounts. This is an automatic renewal of an FCNR B deposit. Excellent point actually, but I'm not sure how we as an auditor would be in a position to do it given the restrictions on a system. Now let's understand first what's the problem. The customer is a non-resident as per FEMA guidelines. Now customer, while being a non-resident, has opened FCNR B deposit, which is available only to the non-resident, after which he returned to India and now he is resident as per FEMA perspective, but the FCNR is still on. More so, FCNR is opened on an auto renewal mode, meaning thereby at the time of renewal, system will not check the residential status of the customer. So what will happen, even though the customer is a resident now, being in an auto renewal mode, the FCNR will keep on revolving. Now that point is into LFAR as well. So the point is there is no specific report available as such with this one. You need to carry out a detailed process. You need to go through the GL review part first. Are there any FCNR B deposits? Then if yes, we need to obtain a detailed GL list of FCNR accounts, and then you need to, on a random basis, you can generate, you can review the account master for auto renewal flag. Since we are branch auditor and we have very less access to database, otherwise this can be done with a simple SQL, that this report can be provided to the auditors as well. In this, I would always suggest those members who are center statutory auditors should step in and they should generate certain set of report, and which should be made available to all auditors, branch auditor. That actually enhances the quality of audit, as well as that also gives a lot of input to the center statutory auditor as well. So collectively we can move further, and probably we can do wonders into this part. I'm not going into this part. I'll quickly go through. Yeah, this is what the guideline is, 14th of September. Now, this was the circular, which also has a reference into master direction. It is also a base for this LFAR updation. So this was the initial circular. It categorically stated that this downgrade and upgrade business should be through STP only. No manual intervention, straight through process, right? However, as we have stated, there may be some issues of gaming the system. Now, important parameters for NPA identification. Now let's understand. The parenthesis would have the paragraph reference number, term loans. Everything in this system is now based on a term called overdue. Now, to understand overdue, you need to first know what is due, what is the due date, and based on that, whether overdue is properly computed or not. So that's the very basic one, the first step onto it. So when it is due, what is called due, what is overdue, and how it is updated into the system, the basic fundamental part, and how overdue is computed.
if you can understand, if you can review this part, half of the battle is won, that overdue is properly computed. Then comes based on overdue, how the system is behaving. That's the second and other important part. Now, moratorium will have an impact on overdue computation. Installment start date would have an impact on overdue computation. EMI setup, non-updation of proper EMI, or loan expiry on interest rate change, or non-updation of EMI or loan expiry on interest rate change. Now, let's say you have change in the interest rate. So either you need to update an EMI, or you need to have an expiry date extended. Now, if nothing is happening, what the system will do, system will mark it as a bullet repayment, and it will balloon the last installment like this on screen. Now, this is very dangerous one, very important one to understand as well. Now, in 2022-23, there were 4 to 5 instances almost in almost all banks where the interest rates were updated or changed. Now, each change requires either a change in an EMI or an last date. And so as to the increase in the interest rate would be compensated or would be equated with a normal low amortization schedule. Now, what happens is you have an interest rate which got updated, but there was no EMI amount updated, plus there was no expiry date got updated. In addition to it, no repayment instructions were also changed. Now, in that scenario, what has happened is, now in first example, the 9,900 was the normal installment which the customer was paying. It was ballooned to 91,000 on the last installment. Now, my opinion, I don't know, I'll take help of Chopra sir here as well. I consider this as a restructuring, because I have given passed on a benefit to the customer in a way that even though his installment was required to be increased by some amount, or I need to extend the loan tenor, I have stated no, your loan tenor will remain the same, your EMI will remain the same, whatever is required to be collected will collect at the end. Now, I find it as a kind of a restructuring, though this is my opinion, but Chopra sir can throw light onto this side. If sir is online, sir, if you can come on, or else you can have it in your deliberation as well, whichever is suitable to you, sir. I think I fully agree with you. It will tantamount to restructuring. Oh, great, sir. Yeah, I fully agree with you. Yeah. Okay. So, see, point is, now there are large number of accounts in system in various banks where this kind of things have happened. So what we need to do is, when we verify or we select a sample, we also need to some network issue, I think, sir. see to it now, what's the amortization schedule now, and whether these throw it up at the end of the loan tenor, nor there is no change in the sanction term as well. So please understand. Yeah, please understand this, that this may have an impact into your current year's audit as well. So please generate the amortization schedule as well. Now, in this part of presentation, I have not kept any of the menu codes, but I have kept CBS review perspective. So if you want to verify these aspects, which are the perspective, that is review the account master, limit master, installment or an amortization schedule, and apportionment of repayment between interest and principal, because it will have now completely a changed amortization schedule. So how it is happening on a recovery or apportionment of recovery, right? Then comes the housing and the staff loan, because there are issues with there are no linkages between HR system and the CBS system, whether the person is actually an employee or not, and whether he is getting whether he is getting proper tagging or not. So that is where the things are. Coming on to the overdraft or a cash credit, there are 3 limbs into this overdue that is out of order aspect. That is balance continuously in excess of limit for 90 days, balance within the limit but no credit in last 90 days, and credit not enough to cover debits. Now, just understand this. If change is made in the limit, it can circumvent this first limb. That is, if 100 is changed to 125, it can circumvent this part and the account will not turn into NPA. Then comes the balance within limit but no credit in last 90 days. Cases where advance payment is made and collected at the start of a year, then it will have a problem. Assuming that a lot of
customers or even the bankers used to suggest that you pay it off in the first week of April, and then that's fine if you don't pay anything on an OD or a CC account. That's not correct. That is incorrect part, right? It is because a running 90-day basis, the things are going on. Then comes the credits not enough to cover debit in previous 90 days. In that scenario, what will happen is that if at all someone has tried to game it through the fictitious credit, then it will also have a problem. It will have a running day basis, and there is a footnote in IRACP how to compute 90 days or whether to include the date on which the day end process is carried out or not. The IRACP is clear to that extent. Please read IRACP as well. This is CBS review perspective. Now, this is an innovative loan product. Since last lot of years, a lot of banks are publicizing. RBI has now categorically stated that loan products being offered as an overdraft facility or facility which entails only interest repayment, it will be considered as OD facility, and out of order would have this one. Now, there few of the members actually last year or a year before, they actually came up to me stating that we have observed certain set of accounts where let's take an example. The customer wished to have 50 lakh rupees. Bank made them to request for 75, and immediately on sanctioning 75, they asked they released 75, and immediately in second day they have deposited 25 lakh back. Now they say that 25 lakh will cover this all subsequent this one. Now that is not a correct one. Reason being, under this 90-day norm, it will go into check for the repayment side as well, being an out of order product. So please review those kind of thing. Now there is absolute clarity into this IRACP, so there is no ambiguity at all. So don't accept that these are term loans or these are this and that and nothing doing. These are categorically mentioned that these are the overdraft and considered to be considered as an out of order. The last one that I will take, I ask you that just SRM and CLL and HCLM screen was there. I have stated that I will tell you something which might be an eye opener for us as well. Now, likewise, interest we have DP setting up in system. Now, system has multiple feature available. One feature is fixed DP, other feature is derived DP. Now, if I mention fixed DP as let's say 1 crore, irrespective of the fact, if I update my stock statement as 1 crore, 2 crore, 100 crores, or even 1 lakh, my DP will remain same as 1 crore. Now that is most dangerous one for us, because the stocks, the sanction letter says that your DP would be based on stock statement so and so, so and so. However, in system, the DP is fixed. Then comes the second option, that is derived DP. Ideally, the derived DP would be based on stock and book date value that you update it on a monthly basis, and basis on that, the DP would be computed and will be assigned to the account. However, there is one more aspect under derived DP where the DP is getting derived from sanction limit. Now, that is also one of the way of getting it fixed. Now, see, there are various things available in system. Many of the members would also tell me that, sir, why systems are designed in such a way that such kind of error can happen. My answer to them is only this: system has a lot of parameters that you can make use of, because system is not made specifically for one segment or one particular aspect. System is made from an holistic perspective. Now, if a particular bank does not wish to use that facility, they need to block that facility so that no user will be in a position to touch this. Now, the point is this: in this case, assuming that in some of the bank or in where we are auditing and we are finding that the derived from SL is on and the DP is not getting changed. So what I would suggest is, in any case, you verify the stock statements, select some of the stock statement to compute the DP, because there is a question in LFAR as well whether DP is properly computed. So in any case, you will require that. Now that DP, just compare it with the DP changes, ACL, HM. In that, through that menu, just check it up whether the DP that you derived is the same DP that got updated or not. Otherwise, see, from a center statutory auditor or a person who can ask for a report through SQL, it's very easy for me to generate a report, or to ask a bank to generate a report that how many accounts are there where the collateral or my primary security, stock and book dates
where the stock statement and book date statements are required to be submitted, and the DP indicator is fixed or derived from SL or other than stock and book dates. It's a very simple one in a trigger form. They can generate it, they can write down this query in a less than an hour's time, and they can generate pan-India basis. The point is, now these are exception reports, not a normal exception report. These are reports where I'll always say that if we have a cohesion between both the central statutory auditor and branch auditor, we can do wonders. So the central statutory auditor, in consultation with bank, should get certain set of reports designed, vet it, and then release it to the branch auditor. Then it would be the best concoction or best thing that would happen. So with that, I think Sanjay ji is also there. So this is what wanted to share. It's a plenty of thing. I'll share the entire presentation, but with the given time and this one, I can open the floor for question as well. Sorry, before Kuntal, opening. I was lucky to hear you. Oh, sir. हाँ जी सर. Yeah, sorry, sir. For सर किसी just a के भी minute. कोई क्वेश्चन है तो या तो क्यूए में डाल दें. नहीं, मैं तो क्वेश्चन नहीं, मैं तो यही कह सकता हूँ that I was lucky to hear him. Sorry, sir. Yeah, I just wanted to, since we have 2-3 minutes time, I'll have case studies. Just wanted to show what we have observed during our audit. Everyone would have this. Since I am presenting now, I'm sharing this one. Now, this was a case where borrower was in need of about 1.44 CR. Borrower was not having that fund, so they have skillfully drafted or given the new set of loans for a new facility exactly of the same amount. So the pre and the post, this one was exactly the difference between the new sanction, and that is how these 4 accounts were saved. So that was this case. Then comes this one, this where borrower account was in overdue, was getting in a very difficult situation because earlier TOD was getting overdue for 89-90 days, nearing to 90 days. So the current account got a TOD. From current account, someone else's current account, that may be a related party, and from that current account the funds were transferred to borrower's account. From borrower's account it was transferred to the account where it was getting overdue. Now it was a clear-cut case of sanctioning of a new loan for the existing one. Only challenge here we would face as an auditor is that you can't say that what is the business transaction between these two companies. But with the time aspect and certain other facts on hand, we could map this, that this was only an Hawks TODs. Now this was the case of this turnover. I've not updated anything. I have removed certain part so that I don't end up sharing someone's data, right? So you can see. Now this was the case where a person was smart. This is a very old case, but the thing is still going on, where the cash was deposited. Now the moment you have a cash, you have a loss of audit trail. Now, once you have a loss of audit trail, it becomes very difficult to justify certain things. So what we have done post to this scenario or this particular aspect, this case, we have changed our audit process. The moment we find that certain set of accounts are there where generally no credit is coming, and out of a blue moon, we get some credit, and that too from cash, we carry out some enhanced processes. First is we check that on that particular day whether some account got a TOD or not. Once we get handover, once we have a list on hand, we verify the list of customers, and then we go into those accounts where the TOD was sanctioned and what was done with the TOD. So that's first. If there was a cash and there is a cash deposit, we try and compare whether the same is going through with certain other evidences, not directly on this or specifically on this. But then there are certain more smart guys. I always say that there are like Bollywood story, and this was there with one of the account. The story goes like this way. The last balance that was there with the teller was transferred to the vault account at 5 o'clock and 1 minute.
The story starts now at 5:14. That is branch close after branch closure. Evening 5:14. 3 customers walk in and states that we have 48 lakh of cash to be deposited. Now all 3 are loan account, that is this borrowers. So we can understand, let's they have the cash deposit, let's deposit it. And last days they do accept cash till late time as well. But interestingly, at by the time they finish it off, in after 5-10 minutes, 2 customers came in stating that I want 48 lakh rupees withdrawal. Now here starts the plot. Now, assuming that if someone is having an account balance of 48, they can withdraw. The problem is, now the customers who came to withdraw cash, they were not having a single rupee balance in their account. Instead, they got the TOD of 49 lakh. Now, you can see whatever we have observed, or almost half day's exercise on a single screen now, and you can take your inference therein, right? So a lot of things happen. Now, this was possible when we have reviewed it through teller account. We had some other, because the particular auditor was pressurized by bank. He was not signing or was not releasing. I was assisting a central statutory auditor firm. And auditor actually sent a cryptic note, a single 1-pager note that some issue is there, kind of this. So we hadn't had much of comfort into this particular set of accounts. So then it called for detailed review, and for the God's grace, we had a time on that particular day, and we were free. So we started utilizing that time to verify this system, and we could find this much. So what I would like to say is, this is an aberration. I don't want to say that everyone is doing this, but we need to keep our eyes and ears open. The system may be perfect, but there are n number of people who can game the system, right? So let's now go on for Q&A. Let me just check. I think something is there in. कितना टाइम है? Someone has उतने ही लेंगे. एक क्वेश्चन ही लेंगे. Chat box, sir. Someone. नहीं सर, एक मैंने लिया है, बिट्टू शर्मा और ईश्वर जसवाल, दोनों को अनम्यूट किया है. एक क्वेश्चन आप जल्दी से पूछ लीजिए सर. Okay. हेलो, हाँ जी, जल्दी से Yes, पूछिए sir. बिट्टू शर्मा जी. हेलो. Yes, sir. You're audible. हाँ जी, बिट्टू शर्मा जी पूछिए क्वेश्चन अपना. सर कोई हियरिंग नहीं है. या बिट्टू जी. नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही. तो नेक्स्ट अभिषेक अग्रवाल जी पूछिए. अभिषेक अग्रवाल जी और ईश्वर जायसवाल जी. मेरा क्यूए में देख लेते हैं सर, इधर से नहीं कोई आ. पेमेंट ऑफ लोन, आप ये देख लीजिए सर. जस्ट एक चैट बॉक्स में रिद्धि जी का क्वेश्चन है, टीओडी फुल फॉर्म टेम्पररी ओवरड्राफ्ट. सो आई थिंक दैट इज डन. नाउ मूविंग ऑन टू Q&A part. Javed Mohammed has a question whether short payment of loan calculated as per actual amortization schedule due to improper feeding of data values in CBS, that is EMI frequency, ROI tenor, etc., will result on change in IRAC classification of account, or it will be treated as a restructured only. See, first and the foremost thing is that I always believe that whatever it's there in sanction letter, it is required to be imitated, or it is required to be updated into the system. System is a secondary part. First part is the contract between the borrower and the bank. What is that? Whether as per that, what is the amount that was required to be collected, whether the same was collected. If it is not, there may be technical issue, but technical issue is a secondary part. First part is the sanction part. If as per that it is an NPA, it's an NPA. If as per that it is not an NPA, then you need to ascertain that what is the reason, and whether there is a technical reason with all justification is available. In that scenario, we can take a call. If system is identified as an NPA, which is not an NPA, then a proper justification is required to have it removed from that part. But it is
a bit lengthy process, and a detailed reasoning should be there. Kapil Dangji has a question: if there is a stock statement available in physical mode in file but not updated in system, will it be NPA? Sir, physical availability of stock statement is not the only activity that is required to be carried out. Second part is that whether based on that stock statement DP was arrived at, and whether that DP was updated into the system or not. Now this is a set of processes. Technically the end result may be that it may not have impacted my asset classification, but that is not the correct way, that you don't update the stock statement itself in the system. That is for the reason is that there is a clause in for the large borrower, if stock statement of an older period, that is 3-month old, is utilized for more 3 months, then that will be considered as an NPA. Now there is an automation of NPA. If you don't update the stock statement, how an automation will work? So this is all, yeah. This is now all interlink items. So ascertain from all perspective. Don't jump to the conclusion part. Just see to it. The journey is also beautiful, sir. So don't need to reach into the destination. The journey is also you can enjoy. Jitendra Kumarji has a question. Same bank sanction another loan in spouse name and save account for NPA of borrower. Then what can we do? Sir, frankly speaking, if it is a separate loan, I can't have anything. However, if the spouse is also having a co-borrower in this one, then it will create more problem. But if it is a completely an independent, this one, all sanction and everything is there, it's again need to check the facts specific. But with your question, I don't find immediately there will be a problem. But yes, if it is she's a guarantor or co-borrower, that is definitely going to be a problem. Vijay Shankar Yadav, please share PDF. Yes, I will share with Ashwini ji. Just give me some time post completion of this. I will definitely share, and we'll share other material as well. So you'll have all this thing. Whether in case of warehousing receipt financing, bank can finance on stock brought on commission basis, that is Kacha or Aratya. Also in sanction letter, it is written that the stock needs to be revalued fortnightly, but the same was not happening. Sir Amarjit sir, I'll require your help here. No, I think number one, if it is not on purchase basis, if he has only bought it on commission basis, it cannot be considered to be stock. So there is no question of any DP being arrived on that particular account. Revaluation is has no consequence basically in that case. If it is not his stock, whether you value or you don't value it, that makes no difference at the end of the day. And you are yourself saying that he's a Kacha Artiya, he's not a Pakka Artiya. So the stock does not belong to him in any case, for that matter. Yes, thanks a lot, sir. Then Kapilji has a follow-up question. System is auto-renewing DP, taking last month's stock statement, but actual stock statement is available in physical mode in file. Will it be NPA? Sir, again, I have stated, don't go or don't wish to go directly to the destination. Enjoy the journey as well. Yeah. Getting an account NPA is a long journey for a stock statement aspect. Go step by step. Ascertain that where the issue has happened, need not necessary that your issue would end up with either NP or not. There are other aspects as well, control aspect as well. So I would suggest, sir, go through IRSCB provision. 180 days is the max time, that is 90, that goes in that way. Again, I am saying don't go by even days as well. Go by the process and the flow. Right, sir? Nidhi ji has a question. Please share PDF. Yes, I will definitely share. Ankit Singhal has a question. What to do in case bank has considered the same DP in calculation? Yes, sir, that is what I am saying. If they have included exactly, if it is used, yeah, DP remains exceeded in any case, and the account has to be considered as NPA. Yeah. Javed ji has mentioned the bank name. I will not name the bank. A bank has one CC facility by name A Traders, where stock statement is required once in a year. That too in February month every year. DP is calculated on that statement throughout the year. Compared with audit financials, stock is always very less. Then with whatever reported in stock statement, whether as an auditor we can comment upon incorrect drawing power. Sir, I think DP is required to be computed on monthly stock statement, right, sir? Yeah. It is. So once in a year. Yeah. Rather, so today it's that if you don't have the DP, it gets into SMA category immediately, because exactly. the SMA status has to be calculated on a daily basis.
So all those things will come into play. Exactly. नीलकांत जी आपका हैंड रेज है, क्वेश्चन जल्दी पूछ लीजिए, इन्होंने निकलना है एक आधे मिनट में। सर Within मेरा 1 छोटा minute. सा क्वेश्चन ये था, जैसे एज ही मेंशन्ड इन द लास्ट दैट कैश निकाला, कैश जमा कराया गया और अल्टीमेटली फिर एबल टू कंसोलिडेट कि वो फैक्चुअल ऐसे ही है, तो आर वी एबल टू टेक इट टू द एमओसी? सर एमओसी इसमें फ्रॉड रिपोर्ट कराया था हमने वो टाइम पे। एमओसी तो पूरा प्रोविजन करा लिया था बिकॉज दिस वाज अ फ्रॉडुलेंट एक्ट ओनली. Whether connivance with the borrower or not, that is I don't want to say. So we actually got it for 100% because there were some other issues in this account as well. I just wanted to keep it only to the system side, so I showed you that part. But there were some other part into that borrower as well. थैंक यू सर. Yeah. I Thank you, think, sir. sir, someone again had same. We'll give the PDF. Sir, Ashwini ji, please share it so all Yeah, yes, everyone's sir. question will be there. I'll share you by day end probably once I यस board सर, the वॉइस tab. ऑफ सीए पे भी शेयर कर देंगे पूरे इंडिया में सर। Yeah. जहां पे आपने सेमिनार देने जाना है वहां भी पहुंच जाएगी। Sorry, sir. In any case, the recording is there, yeah. This recording will be there, so PDF automatically is there. Yeah. It will be there. They can view it in the video. Where is the problem? Ashwin ji, let the season continue. It should not end here. Yes, sir. सर कुंतल भाई है टाइम का, निकलना चाहेंगे आप अभी? मैं थोड़ी देर हूँ सर. चलो About ठीक है सर, 15 minutes I'm there. चलो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू कुंतल भाई फॉर द नाइस डेलिब्रेशन. Although we have heard your deliberation by switching off the video because there was a bandwidth issue with Kuntal bhai. Yes, sir. So he is sitting somewhere else from away from I'm the at Coimbatore right office. now. So we switch off the video, but we were listening everything. It was a nice and wonderful deliberation under the presence of बैंक ऑडिट गुरु अमरजीत चोपड़ा जी की Yeah. प्रेजेंस में आपने इतनी बढ़िया डेलिब्रेशन दी. अब मैं आगे कहूंगा कि कुछ चेहरे, कुछ मैसेज आपको आने शुरू हो गए होंगे और कुछ आएंगे भी कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं. संजय अग्रवाल जी के इलेक्शन हमने पहले ही डिक्लेयर कर रखे हैं 3 साल. हमारे पास साथ पास्ट प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट भी बैठे हैं और संजय अग्रवाल जी को हमने भावी प्रेसिडेंट के रूप में भी देखना है. उससे पहले हमें उनको सेंट्रल काउंसिल में पहचाना पड़ेगा क्योंकि अब ये वोटर टेस्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं. उधर इलेक्शनों की डेटें भी डिक्लेयर हो रही हैं, इधर हमने भी इनका कैंडिडेचर इवन दो 3 साल से डिक्लेयर कर रहे हैं, अब दोबारा भी डिक्लेयर कर दिया है. अभी वोटरों के लिए डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए आगे बढ़ेंगे. तो विद योर सपोर्ट मैं तो ये कहूंगा कि जो सलमान खान की मूवी में है कि आप एक को आगे कहो, वो आगे 3 को कहें, 3 आगे 9 को कहें, 9 27 को कहें, तभी ये कारमा बनेगा और जुड़ेगा. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय भाई से, चोपड़ा सर ने भी रिक्वेस्ट की थी, चोपड़ा साहब ने भी इच्छा जाहिर की थी स्टार्टिंग में कि संजय जी का ओपनिंग रिमार्क्स कराओ. अब ओपनिंग रिमार्क्स सर ने ये नहीं कहा था कि कुंतल भाई के पहले करवाओ या इनसे पहले करवाओ, तो मैं चोपड़ा जी से पहले ओपनिंग रिमार्क्स करवा रहा हूँ संजय भाई के. और गिरीश ओझा जी से बात हुई है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि 4:30-5 बजे के बीच में जैसे ही अवेलेबल होंगे तो वो ज्वाइन करेंगे. संजय भाई. थैंक यू वेरी मच अश्विनी जी. सबसे पहले मेरे प्रेसिडेंट जिनके अंदर आई हैव डन माय आर्टिकलशिप, उनको नमस्कार. एंड देन द नेक्स्ट फैकल्टी कुंतल पी शाह, who always bless us the voice of CA every season. And then we have on screen few of the our patrons, Ram Bansal ji, Gaurav Gupta bhai, and Karta of my HUF Ashwini Jindal ji, who's taking all effort for all these webinar, and a lot of more season is coming there. Friends, I'll just share few things only. That the voice of CA, which is led by us, and Ashwini ji is one of the promoters in this voice of CA, and we are doing a lot of things, and we have plans in the coming few months of some programs physically as well as, and the presently
I'm being given in the institute few of the responsibility for which I would like to share with you. There are 3 committees which has been assigned to me. Never in the past 3 committees have been given to me as a chairman. So out of that, one is Taxation Audit Quality Review Board, wherein we are going to do the checking of the audits of tax audit, the transfer pricing audits done by various big companies, and approximately 100 reports we are going to take, just like our other committees of Financial Review Board. Financial Review Board takes care of only the annual accounts. The Taxation Audit Quality Review Board takes care of the tax audit report and other taxation audit reports, which include the indirect tax also. Now, the second is the Committee of Member in Public Services and Entrepreneurship. So, in this, I will be coordinating with the various our member chartered accountant, those who are in public service or as entrepreneurs. So, I'll be coordinating with the various IRS, IFS, IAS, police, IPS. Then we have in the government also some of the people, those who are in M of Affair, MP, MLAs. I need to also have the interaction with them, so that what services we can open up for our member and what new opportunity we can bring to our members. And in that, we have done some of the webinar. This year, we have also done one webinar in this committee where some 30-40 vacancies which have been now opened by the government in Indian Cost and Accountants, where CAs and ICWA both can participate and both can join. So we have introduced 3-4 members, chartered accountant. They have come there, and that is they have explained how to qualify, what are the advantage, disadvantage of this particular service, which is open to members also. And it is a lateral entry. The age limits are there, but still any member who has passed chartered accountancy can join this. Then the last committee, which is the most vibrant committee, is being assigned to me, is aggregation of firms. It's a dream for me. And when I came in the council in 2010 for the first tenure, at that time also, we have tried to see this, that there are guidelines which comes, and networking should be there, merger should be easy. So this year I've been assigned this committee where I have already approved one mail where I need the suggestion of the members for the purpose of making the ease for the merger, building up big practice, building up the networking, and the overseas, both domestic. And also, I'm going to look to the grievances of the member in relation to the troubles which they face when they interact in respect of their firms, whether it is admission of firm, whether it's a retirement of firm, whether it is a change of office. All those things we are going to consider in this particular committee. And then we will come with a draft, maybe I think in the next month, somewhere in the next end of the next month, I'll come with a draft. Then we'll have public consultation with every member, and whatever your suggestions are there, you can send to me. So these are the few things which are developed at institute level. At the VOCA, Voice of CA, Ashwani ji is coming with new ideas, new things every year. And this year also, we are, in addition to giving the academic, we are also trying to provide some other things. Like we have done just one camp with Swami Ramdev ji. It was a huge 400 members and their families. We have gone for 3 days and we have learned so many things. And we are going to have some other activities also beside the academic. This is the few words which I would like to say. But I would like to say with the folded hand to everyone that please give your all suggestions
we are trying to cope up with everything. We have brought last time the think tank also, and there are a lot many opportunities which we have brought to our members, and we have also given some skills. So this year also we are going to have that webinar, seminar, whatever is possible. And I'm also thankful to Amarjit Chopra sir, my president, under whom, as I said in the beginning, I have done my articleship, and whatever you are seeing today, that whenever I speak in the council, it is all because of him that I can represent today. And the courage which I got, he inculcated everything in me in those 3 years, that how to represent in the council, how to talk, and how to go to the various government authorities. So with this, thank you very much. Now I will be not taking much time. I'm also thankful to Kuntal Shah, as already said, that he is a master, and always every year he comes and gives the blessings to the Voice of CA. Kindly continue, and if need be, if the people members ask for more session, we reserve our right to call you again. Thank you very much. Thanks a lot. Ashwani ji, over to you. संजय जी, MK अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मैंने अभी देखा, आई थिंक शायद महेंद्र खन्ना जी भी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि MK अग्रवाल जी ने हैंड रेज किया है, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज. I just want to congratulate and support your views that a worthy person, humble, gentle, and a very nice personality, Mr. Sanjay Agarwal. I sincerely want to that he should be again win the election, and we should see him as our future president. And since Mr. Chopra, he is also here, and I also want to congratulate him also that for such a nice program. And especially I want to say, when I joined this Yogagram program organized by Mr. Sanjay Agarwal Guruji and Ashwini ji, it was a very nice experience. And I want to especially convey my sincere thanks that he is such a nice person that he gives his friends more opportunity than to himself. मैं बहुत ही ज्यादा इस बात को दिल से कहना चाहूंगा कि योग ग्राम में रामदेव जी की सानिध्य में अपने आप को पीछे बैठाकर मुझे आगे बैठाने का जो एक इन्होंने जो कटसी दिखाई, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय और हाईली अप्रिशिएबल है, जो मेरे दिल में हमेशा जिंदगी भर रहेगी. ज्यादातर नेता अपने आप को आगे रखते हैं, परंतु ये अपने साथियों को और अपने मित्रों को इस तरह से जो प्रमोट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स टू हिम. एंड आई वंस अगेन कन्वे माय सिंसियर थैंक्स टू चोपड़ा जी एंड ऑल द पैनल स्पीकर्स, एंड आई विश इन एडवांस कि भगवान इनको बहुत अच्छी सफलता दे और भविष्य में हम इनको जल्दी हमारे भावी प्रेसिडेंट के रूप में देखें. और दोबारा श्री चोपड़ा जी को मेरी हृदय से बहुत बहुत नमस्कार. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सर. मैं मेंबरों को अनाउंस भी कर दूं कि जैसे संजय जी ने स्टार्टिंग में कहा था कि सीरीज उन्होंने इसलिए कहा था कि ये फर्स्ट प्रोग्राम है बैंक ऑडिट पे. नेक्स्ट प्रोग्राम मैं रिक्वेस्ट करके मैंने की है संजय वासुदेवा जी को, तो उनका भी जैसे ही टाइम अवेलेबल होगा तो उनके साथ और एम के खन्ना जी के साथ भी एक प्रोग्राम करेंगे, और एक बीडी गुप्ता जी के साथ, और एक स्पीकर और जो हमारे टेक्निकल पार्ट पे होंगे. 3 प्रोग्राम हम 31 मार्च से पहले बैंक ऑडिट के ऊपर प्लान कर रहे हैं, तो वो हम इन सीरीज करेंगे. तो ये सीरीज हमारी 31 मार्च को खत्म होगी. उसके बाद हम टैक्स ऑडिट की सीरीज भी शुरू करेंगे, और 10B और BB की सीरीज भी शुरू करेंगे, लाइक अर्लियर लास्ट ईयर हमने की थी, ताकि मेंबरों की जितनी भी क्वेरीज हैं 10B और BB के ऊपर, चैरिटेबल के ऊपर, वो भी दूर हो सके. विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच. आप सब हमारे साथ ज्वाइन हुए फर्स्ट पार्ट के लिए. फर्स्ट थैंक्स टू द कुंतल शाह. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड पार्ट कि एडवांसेस का ऑडिट कैसे करना है, कैसे ध्यान से ऑडिट करना है, और प्रोफेशन को कैसे हमने ऑडिट को बचा के रखना है. ये आज हमें गाइड करेंगे श्री अमरजीत चोपड़ा जी, जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि हमें गाइड करते रहे हैं जब से हम इस प्रोफेशन में आए हैं. तब से तो मेरे याद है 24 ईयर से कि हम इनका ही लेक्चर मोस्ट अवेटेड सुनते थे बैंक ऑडिट के ऊपर. थैंक्स टू जूम कि आज की डेट में हम
मतलब जूम के ऊपर डिफरेंट फैकल्टीज के साथ और डिफरेंट टाइम पे सुन पा रहे हैं। अदरवाइज तो एक लेक्चर इनका अरेंज करने के लिए भी ब्रांचेस को टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो थैंक यू वेरी मच सर। आई रिक्वेस्ट अमरजीत चोपड़ा जी टू स्टार्ट विद हिज डेलीगेशन। थैंक यू अश्विनी जी, एंड ऑफ कोर्स संजय अग्रवाल जी, और फ्रेम में इस वक्त राम बंसल जी भी हैं और गौरव गुप्ता जी भी हैं, और M.K. अग्रवाल जी की मैं आवाज सुन चुका हूँ। थैंक्स अ लॉट टू ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स आल्सो. I think Sanjay has been very humble in saying certain good words about me. I think he himself deserves all those kudos and praise. बाकी M.K. अग्रवाल जी ने काफी कुछ बोल दिया, मैं बोलूंगा नहीं उसके बियॉन्ड, बेसिकली बिकॉज I think in any sphere of life, forget about politics, forget about elections. हर स्फीयर में एक क्वालिटी बहुत जरूरी है कि आप में एरोगेंस नहीं होनी चाहिए और आपका सेल्फ इंटरेस्ट बाकियों के इंटरेस्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में. मेरे ख्याल में ये क्वालिटी संजय जी में है, तो वही इनको आगे लेके जाएगी. अभी तक यहाँ तक पहुंचाया, बाकी भी पहुंचाएगी जहां पे भी पहुंचाना. और अश्विनी जी, आप तो 24 घंटे इसी काम में है, उसमें कोई बात ही नहीं है. तो मुझे और कुछ कहना नहीं इसके बारे में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है बैंक ऑडिट, बैंक ऑडिट में रहूं तो ठीक है. जहां तक बैंक ऑडिट का सवाल है, अभी तक पैनल कल शाम को ही मेरे ख्याल बैंकों में आया है और 5-4 रोज में क्लियर हो जाएगा कि नए ऑडिटर कितने अपॉइंट हुए. पुराने तो कंटिन्यू रहेंगे जिनके 4 साल पूरे नहीं हुए, परंतु नए कितने अपॉइंट होंगे ये समय बताएगा. उसका एक एप्रीहेंशन ये है कि पिछले साल जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 70% पर लाके लिमिट खड़ी की थी एडवांसेस की, उसमें एक लाइन नीचे ऐड कर दी थी कि भाई अगले साल से बैंक अपनी पॉलिसी खुद डिसाइड कर लें कि कितना परसेंटेज ऑडिट एडवांसेस उन्होंने ऑडिट करवाने. अब अगर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर और बैंक ये मान के चले कि साहब हमारी रेंज 60% में भी कंफर्टेबल है या 50% पे कंफर्टेबल है, तो आप उनको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उनको कोई ये डायरेक्शन नहीं है कि 70% का ऑडिट होना चाहिए, 80% का होना चाहिए, 90% का होना चाहिए. अगर सेंट्रल ऑडिटर और बैंक समझते हैं कि 90% का होना चाहिए तो 90% भी हो जाएगा. पर मुझे लगता नहीं कि 70% से ऊपर कितने बैंक जाएंगे. 70% से नीचे की चॉइस तो ले सकते हैं, परंतु 70% से ऊपर की चॉइस लेंगे, मुझे इसमें कोई डाउट नजर आता है. हालांकि पिछले साल एक बैंक ने काफी हायर परसेंटेज भी करवाई है, इफ यू रियली आस्क मी. परंतु इस साल जब डिस्क्रिशन दे दी जाती है ना किसी बैंक को, तो उस डिस्क्रिशन में वो क्या इस्तेमाल करेंगे डिस्क्रिशन, ये कहना बड़ा मुश्किल है. अब वो डिपेंड करेगा सेंट्रल ऑडिटर्स के ऊपर, वो डिपेंड करेगा ऑडिट कमेटी चेयरमैन के ऊपर. अब हमारे जो अपने डायरेक्टर्स हैं बैंक्स के अंदर, जो ऑडिट कमेटी चेयरमैन भी हैं, और जो सेंट्रल ऑडिटर्स हैं वो तो इन एनी केस हमारे प्रोफेशन के ही हैं, वो क्या स्टैंड रखेंगे ये उस पर मुनस्सर. लेट्स बी वेरी क्लियर सो फार एज दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कंसर्न. सो ये तो आने वाले हफ्ते भर में क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या परसेंटेज ऑडिट्स की, किन किन को नए ऑडिटर्स को ऑडिट आना है या किन को नए ऑडिट नहीं आना. परंतु एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कही थी, बैंकिंग में जो काम है, वो स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट का हो, वो कॉन्करेंट ऑडिटर्स का हो, वो फॉरेंसिक ऑडिट का हो, वो किसी और नेचर का हो, अगर ये काम हमें बचाना है तो हमें ही बचाना है, ये मैं आपको बता सकता हूँ. आप ये एक्सपेक्ट करें कि इंस्टीट्यूट बचा पाएगी, कोई और नेता आगे बचा लेगा, वो नहीं है. ये हमारी क्वालिटी, हम क्या दे पाएंगे, ये उसके ऊपर मुनहसर है. अगर हम मतलब कि आई डोंट वांट टू से, जिस तरीके से हम फॉरेंसिक ऑडिट में कोट कर रहे हैं और जिस तरीके की फीस कोट कर रहे हैं, उसमें वो फॉरेंसिक ऑडिट हो ही नहीं सकता. सच्ची बात ये है. और फिर हम उसमें जो क्वालिटी देते हैं वो एक अलग बात है. और कुछ लोग जिस तरीके से अलॉटमेंट्स करवाते हैं या करते हैं, उसमें भी अलग बात है. मैं उस बात में जाना नहीं चाह रहा हूं आज की डेट में.
मेरी हाथ जोड़ के एक ही विनती है, लेट्स, कॉम्पिटेंस एक बात है, लेट्स हैव एन इथिकल कंडक्ट, लेट्स डू समथिंग विच befits my stature, लेट्स डू समथिंग विच befits my professional stature। और अगर हम नहीं करेंगे, काफी कुछ चला गया है, काफी कुछ चला जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, भाई हम उस तरीके से काम करें जो कि हमें बफिटिंग हो और जो हमारे प्रोफेशन को ऊपर की ओर लेके जाए, जिससे हमको ये पता लगे, जिससे हम सबका ये ज्ञानवर्धन हो कि भी क्या। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं आपको कोई भी। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अभी डिस्क्लोज हुए, 2 दिन पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डिस्क्लोजर हुआ। उसमें एक कंपनी है मदन लाल लिमिटेड, 296 करोड़ का रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल्स है 296 करोड़ की। उसने पता कितने करोड़ की डोनेशन दी है उस साल में? 280 करोड़ की। और वो कहां पे मर्ज है? अदर एक्सपेंसेस में। अगले साल में जीरो है उसकी टर्नओवर, पिछले साल में जीरो है टर्नओवर। इस साल में उसने रेवेन्यू जनरेट किया 296 करोड़ का, 280 करोड़ की डोनेशन दे दी। तो ऑडिटर क्या कर रहे थे भाई? मैनेजमेंट तो जो कर रही थी कर ही रही थी, ऑडिटर क्या कर रहा था उस केस में? और मैं तो ये भी पूछूंगा कि टैक्स अथॉरिटीज क्या कर रही थी? कोई कंपनी ऐसी हो सकती है कि 296 करोड़ की टर्नओवर में 280 करोड़ की डोनेशन दे दे? एंड व्हाई इट वाज नॉट बीइंग क्वेश्चन? एंड वेयर वाज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इन दैट पर्टिकुलर केस? सो मेरा एक ही विनती है सबसे, प्लीज डू द जॉब क्वालिटेटिवली, कॉम्पिटेंटली, इन व्हाटएवर मैनर यू वांट टू डू इट। मैं जब कहता हूं इन व्हाटएवर मैनर यू वांट टू डू इट, आपकी प्रोसेसेस अलग हो सकती हैं, पर एंड ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए कि हमें हर तरीके से अपना जो ओपिनियन है वो इंडिपेंडेंटली, बिना किसी डर के एक्सप्रेस करना है। भैया आप तो जब भी आप किसी भी बैंक में जाओगे, अगर कहीं पे एंट्री मार ली है तो 4 साल से पहले तो आपको कोई कुछ कर नहीं सकता। और अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो देन व्हाई टू फियर इट? प्लीज गो अहेड विद योर रिपोर्ट्स, विद व्हाटएवर रिपोर्ट्स हैव टू बी गिवन। कोई भी एमओसी देना तो एमओसी दो ना। हु स्टॉप्स यू टू गिव दैट पर्टिकुलर एमओसी? और जहां तक प्रोसेसेस की सवाल है, मैं ये बता सकता हूँ कि 2021 से there are tremendous changes which have come in for us basically as auditors to look into। उसमें से एक हमें ये देखना है कि जो भी लोन फॉर्म्स हैं, जो भी लोन फॉर्म्स बैंक के पास आए हैं विद रिगार्ड टू, उसमें जो भी मैंने रीपेमेंट डेट्स भरनी है, अगर टर्म लोन मैंने दिया है किसी को और उसमें कोई अगर कार का लोन दिया और उसमें ईएमआई आनी, तो क्या क्या रीपेमेंट डेट्स है सारी की सारी भरी होनी चाहिए। ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता इस मामले में अब किसी भी सूरत में। और अगर उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि अगर पुराने केसेस हैं तो जब रिन्यूअल के टाइम पे ये होगा तो रिन्यूअल के टाइम पे वो सारे के सारे फॉर्म भरे जाएं। और दूसरा उन्होंने जो चेंज ये की थी कि भाई जिसमें जो एमएस एसएमएस स्टेटस है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स का स्टेटस है, जिसमें किसी तरीके की भी इरेगुलरिटी डेवलप होती है, वो डीपी की भी हो सकती है, वो ओवरड्यू पेमेंट की भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, एलसी डिवॉल्वमेंट की भी हो सकती है, बिल डिसऑनर की भी हो सकती है, गारंटी इन्वोकेशन की भी हो सकती है। किसी भी अकाउंट में अगर किसी तरीके की इरेगुलरिटी है तो डे टू डे बेसिस पे उस अकाउंट का जो स्टेटस है वो चेंज होना है। वो ये नहीं कहता कि अब आप मंथ एंड पे उसका स्टेटस चेंज करोगे या क्वार्टर एंड पे उसका स्टेटस चेंज करोगे। यू हैव टू, द बैंकर हैज टू चेंज दैट स्टेटस एवरी डे इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्किंग आवर्स। अब हमें यही देखना है कि इन्होंने जो एसएमए का स्टेटस है वो क्वार्टरली बनाया है, मंथली बनाया या डेली बेसिस पे चेंज किया। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि पहले कुछ बैंकों ने ये पॉलिसी बना ली थी कि कहीं पे अगर कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई और नहीं आई तो उसको अगर जो 90 दिन का पीरियड था कैलकुलेट जो करते थे, उस दिन से लेके अगर 15 जून की डेट आ रही है 90 दिन पूरे होने की, तो 15 जून को नहीं करते थे। वो कहते थे ठीक है यार
हम 30 जून को उसका एनपीए कर देंगे। अब उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। वो जाके छट गया था। आप हर सूरत में अकाउंट की जो भी इरेगुलरिटी है, जो एनपीए का स्टेटस पे डिटरमिन करना है, जिस दिन 90 दिन पूरे हो जाएंगे, there has to be an automated system of the bank which will throw out the NPA status of that account on that particular day. 90 दिन से आपके टर्म लोन के केस में 90 दिन से ऊपर का है, आपके सीसी अकाउंट में 90 दिन का है। That's the basic difference that we must note. जहां जहां पे मोर देन 90 डेज लिखा है वो टर्म लोन के केसेस है, और जहां पे 90 दिन का केस लिखा है वो आपके सीसी अकाउंट के केसेस है। तो इन दोनों बातों में जरा डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा, और ये यू विल हैव टू मेक श्योर अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस कि इस तरीके से बैंक में ऑटोमेशन हुई है कि किसी भी तरीके में कोई डेट आपकी शायद 15 जून निकलेगी एनपीए की, कोई 16 जून निकलेगी, कोई 16 जुलाई निकलेगी, कोई 28 सितंबर निकलेगी। अगर किसी बैंक में सारे के सारे अकाउंट एनपीए लास्ट डेट में हो रहे हैं, ये दिखाए जा रहे हैं कि भाई यहाँ तो 30 जून का हुए, या 31 जुलाई को हुए, या 31 मार्च को हुए, या 31 दिसंबर को हुए, तो उसमें वो ऑटोमेशन नहीं है। एंड एज एन ऑडिटर, वट एवर वर्क यू हैव टू डू, वर्क यू हैव टू परफॉर्म to really bring the date of NPA to the actual level, that you will have to do under those circumstances, क्योंकि वो कुछ उस डेट को जाके वो इंटरेस्ट रिवर्सल होना, और ये भी ऑटोमेशन में होना चाहिए कि जिस दिन आपने एनपीए किया उस दिन आपका सिस्टम जो अनकलेक्टेड इंटरेस्ट है उसको हर सूरत में रिवर्स कर दे, जो आपकी अनकलेक्टेड कमीशन चार्जेस हैं, जो आपके अनकलेक्टेड बाकी चार्जेस हैं, उनको अपने आप रिवर्स कर दें। ये नहीं कि आप मैनुअल उसमें इंटरवेंशन चाहिए, मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए नहीं। आज की डेट में पूरी चीज यही मांगी जा रही है कि मैनुअल इंटरवेंशन इज नॉट टू बी देयर, इट हैज टू बी ऑल ऑटोमेटेड, एंड ऑन एन ऑटोमेटेड बेसिस the NPA status has to be determined in those cases. Another thing is that which this circular brings out, जो 21 के सर्कुलर्स हैं, जो सिग्निफिकेंट सर्कुलर्स हैं, वो ये कहते, पहले क्या होता था, एक अकाउंट एनपीए हुआ, उसमें सपोज कीजिए 90 दिन से ऊपर अकाउंट पे आपने उसको एनपीए क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद आप वो फिर उस पे इंटरेस्ट जो था वो बनता रहा, और आपने आखिर में जाके ये किया कि जो इस तरीके से उसकी पेमेंट कर दी कि 90 दिन से कम का इंटरेस्ट लगे कि ओवरड्यू। वो कहता अब ये नहीं हो सकता भाई किसी भी सूरत में। सपोज कीजिए 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट डेबिट हुआ था, उसको 90 दिन हो चुके हैं, आपने उसमें से और 1 क्वार्टर और निकल गया, तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई वो पहले वाला जो इंटरेस्ट था या ये वाला जो इंटरेस्ट है और थोड़ा सा इंटरेस्ट और ऐड करके मैं इसको दे दूं और मेरा अकाउंट परफॉर्मिंग हो जाएगा। अब ये नहीं हो सकता। वो ये कहता है प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की जितनी इरेगुलरिटी है अकाउंट में, वो पूरी की पूरी इरेगुलरिटी आपको क्लियर करनी पड़ेगी बिफोर द अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज परफॉर्मिंग। पहले सिचुएशन और थी, पहले सिचुएशन ये थी कि आपका सपोज कीजिए टोटल इंटरेस्ट ड्यू बनता है 1 करोड़ रुपया, उसमें से 2 क्वार्टर का है 50 लाख, आपने क्या किया 60 लाख दे दिया और ये कहा जी अब तो 90 दिन वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होगा उसको। अब वो कहते हैं ये नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। अगर आपने अकाउंट को परफॉर्मिंग ट्रीट करवाना है तो पूरे का पूरा इंटरेस्ट या प्रिंसिपल जो ड्यू है इस पर्टिकुलर अकाउंट में वो देना पड़ेगा। एक और बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आई 21 के अंदर जो हमें मान के चलनी पड़ेगी, और वो चेंज ये थी कि अगर, क्योंकि बैंकिंग में कंसेप्ट ये है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स में कंसेप्ट ये है, अगर किसी पार्टी का एक अकाउंट एनपीए है तो बाकी सारे अकाउंट एनपीए हैं। तो सपोज कीजिए एक अकाउंट में तो आपका एनपीए है और दूसरे अकाउंट में आपका सिर्फ इरेगुलर है। और पहले क्या लोग करते थे, जो अकाउंट एनपीए हुआ उसको क्लियर कर देते थे और दूसरे का कहते थे जी अब ये एनपीए नहीं हुआ, इसमें तो सिर्फ इरेगुलरिटी है।
अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा आप ये नहीं कर सकते हो भाई, अगर एक बार आपका ग्रुप अकाउंट एनपीए हो चुके हैं, सारे के सारे अकाउंट एनपीए हो चुके हैं बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, तो उस केस में आपको सारी की सारी इरेगुलरिटीज जो डिफरेंट अकाउंट्स में वो क्लियर करनी पड़ेंगी बिफोर द अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज अ परफॉर्मिंग अकाउंट। सपोज कीजिए आपका टर्म लोन अकाउंट है, आपका सीसी अकाउंट है, आपका बाकी कोई अकाउंट है। टर्म लोन अकाउंट में तो सिर्फ इरेगुलर है, 90 दिन से कम का है। सीसी में 90 दिन से ओवरड्रॉन था, तो उसकी वजह से टर्म लोन भी आपने एनपीए क्लासिफाई कर दिया था। अब आप ये नहीं कर सकते कि भी मैं सीसी अकाउंट में तो पूरी इरेगुलरिटी खत्म कर देता हूं और उसमें जो है इरेगुलरिटी खत्म नहीं करता। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा कि अगर आपने सीसी अकाउंट और टर्म लोन दोनों को परफॉर्मिंग ट्रीट करवाना है तो सीसी अकाउंट की पूरी इरेगुलरिटी दूर करो, और जो टर्म लोन में जितनी भी इरेगुलरिटी है वो आपको दूर करनी पड़ेगी बिफोर द अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज अ परफॉर्मिंग अकाउंट। आई थिंक दिस इज अ वेरी मेजर चेंज इफ यू रियली आस्क मी, बिकॉज it requires more funds from the borrowers. The borrower has to arrange more funds than what he was supposed to arrange before 21 for that particular purpose. In cash credit account, what's balance sheet जो है वो डेट जो था बैलेंस शीट डेट वो खत्म हो गया। पहले क्या होता था, कैश क्रेडिट अकाउंट को नॉर्मली जो एनपीए क्लासिफाई करते थे वो जाके 31 मार्च को करते थे। अब कैश क्रेडिट अकाउंट अगर सपोज कीजिए इरेगुलर रहता है 90 दिन से, जो उसकी क्लॉजेज है, टर्म लोन में तो ये है कि भाई अकाउंट ओवरड्यू हुआ और अगर वो 90 दिन तक ओवरड्यू रहा, 90 दिन से ज्यादा, देन द अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए। कैश क्रेडिट अकाउंट में कंडीशंस आर डिफरेंट, वहां पे है आउट ऑफ ऑर्डर की। अगर आपकी सैंक्शन लिमिट 1 करोड़ है परंतु आपने अवेल कर दिया 1 करोड़ 10 लाख, तो उस केस में ये जो 10 लाख की रेगुलरिटी अगर 90 दिन चल गई तो आप एनपी हैं, बिकॉज देन द अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। परंतु अगर आपकी लिमिट्स 1 करोड़ की हैं, आपने अवेल तो 90 लाख किया परंतु आपके पास डीपी नहीं थी, और अगर आपके पास डीपी नहीं थी और आपने 90 लाख अवेल किए तो भी आप इरेगुलर हैं, आप आउट ऑफ ऑर्डर हैं। तो अगर ये इरेगुलरिटी 90 दिन तक चल गई तब भी आप एनपीए हैं। और अगर किसी क्वार्टर में जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ है और वो अगर अगले क्वार्टर में आपने रिकवर नहीं किया है तो भी आप एनपीए हैं। और अगर इंटरेस्ट या तो बिल्कुल ही आपने पे नहीं किया या आपने कम पे किया है, अगर आपको डेबिट तो हुआ था 50 लाख और आपने जो आपके क्रेडिट्स आए हैं वो क्रेडिट कैश क्रेडिट अकाउंट में सिर्फ 25 लाख के हैं या 30 लाख के हैं, 40 लाख के हैं, और ये रेगुलरिटी 90 दिन की है तो भी आप एनपीए हैं। कैश क्रेडिट अकाउंट में जब पहले बैलेंस शीट डेट की बात होती थी, अब वो बैलेंस शीट डेट की बात का ना सिग्निफिकेंस ये है कि अगर इस तरीके की इरेगुलरिटी किसी भी डेट को कंटिन्यू होती है 90 दिन से, वही ऑटोमेशन की बात है कि ऑटोमेशन अपने आप जो है, जो ऑटोमेटेड सिस्टम है बैंकिंग का, वो अपने आप इस अकाउंट को एनपीए थ्रो आउट करेगा। अगर नहीं कर रहा तो आप उसको पकड़ेंगे। अभी मैंने देखा काफी क्वेरीज आई विद रिगार्ड टू द स्टॉक स्टेटमेंट्स कि भाई स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दी उसने तो क्या एनपीए हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स बड़ी क्लियरली ये बोलते हैं कि अगर आपने किसी को डीपी अलाउ कर रखा है बेस्ड अपॉन ए स्टॉक स्टेटमेंट व्हिच इज मोर 30 days old, in that case the account will be considered as NPA. अगर किसी अकाउंट में रिन्यूअल, जिस अकाउंट की रिन्यूअल होनी चाहिए या रिव्यू होना चाहिए, अगर वो अकाउंट रिन्यू नहीं हुआ या रिव्यू नहीं हुआ और वो इरेगुलरिटी, ये जिंदल कौन बोल रहे हैं यार, उनको जरा बोलो अपना म्यूट कर लें या आप म्यूट कर दो उनको। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? मनी जी एक बार म्यूट कर दो सारों को प्लीज। लो सर, कर दिया सर।
सर अनम्यूट करो चोपड़ा साहब। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर कैश अगर अगर आपके रिन्यू होना कोई अकाउंट या रिव्यू होना अकाउंट और वो रिन्यू नहीं हुआ फॉर ए पीरियड ऑफ से 3 मंथ्स और ये इरेगुलरिटी और 90 दिन चल गई, तो आरबीआई ने कहा कि 90 दिन तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर 180 दिन के बियॉन्ड अगर ये रिन्यू नहीं हुआ या रिव्यू नहीं हुआ तो अकाउंट को नेसेसरी आपको एनपीए क्लासिफाई करना ही पड़ेगा। एक नॉर्थ का ही बैंक है जिसके अंदर एक अकाउंट रिव्यू नहीं होता था या शॉर्ट रिव्यू होता रहता था, 5-5 साल, 4-4 साल, 3-3 साल, अकाउंट को कभी एनपीए क्लासिफाई नहीं किया। I still remember that when we had a talk with the RBI authorities, आरबीआई ने उसके बाद वो सर्कुलर लेके आए और ये कहा, वर्चुअली ये क्लैरिफिकेशन दी कि भैया 6 महीने से ज्यादा कोई भी अकाउंट जिस डेट को ड्यू है रिन्यूअल या रिव्यू के लिए आप उसको नहीं रख सकते। 90 दिन में ये हो सकता है कि आप ये कह दें ऑडिटर को कि भाई ऐसा है कि हमने भेजा हुआ है हेड ऑफिस में, या हेड ऑफिस कह दे कि हमने कुछ और क्वेरी सीख की हुई है बरोर से, वहां तक तो ठीक है। परंतु अगर ये क्वेरी सेटल नहीं होती है 6 महीने तक फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल, in that case there is absolutely no escape route and the account will have to be classified as NPA under all circumstances. मेरे अपने हिसाब से सबसे मुश्किल काम लोन्स में, लोन्स क्लासिफिकेशन में कैश क्रेडिट अकाउंट में है, जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि स्टॉक्स आपके कब्जे में नहीं होते, डेटर्स आपके कब्जे में नहीं होते, बैंक के उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, स्टेटमेंट्स को कोई एनालाइज करता नहीं है। अभी क्वेश्चन पूछे गए कि साहब स्टॉक स्टेटमेंट आई है परंतु फाइल में है परंतु उसने चढ़ाई नहीं है, तो सवाल उसके बेसिस पे एनपीए करने का नहीं। कुंतल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आप उसके बेसिस पे उसको एनपीए नहीं करोगे कि उसने वो फाइल से चढ़ाया या नहीं चढ़ाया। आप स्टॉक स्टेटमेंट को देखोगे, अगर आप स्टॉक स्टेटमेंट को रिलायबल मानते हो और उसके हिसाब से डीपी बनती है तो आप छोड़ दोगे, आप उनको बोलोगे कि भाई इसको फीड कर दो आज की डेट में, यहां तक ठीक है, परंतु आप उसके बेसिस पे उसको एनपीए नहीं करो। परंतु अगर स्टॉक स्टेटमेंट आई ही नहीं है 6 महीने से तो अकाउंट एनपीए होगा ही होगा। उसमें इंटरेस्ट कितना भी बढ़िया सर्विस हो रहा हो, उसमें ऑपरेशन कितनी भी बढ़िया हो अकाउंट के अंदर, नोबडी कैन क्वेश्चन दैट पर्टिकुलर एनपीए क्लासिफिकेशन। हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम अकाउंट को एनपीए करने से घबराते हैं, यार अकाउंट की ऑपरेशन इतनी बढ़िया। भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि अगर अकाउंट की ऑपरेशन बढ़िया तो उसको स्टॉक स्टेटमेंट देने में दिक्कत क्या है, उसको डेटर स्टेटमेंट देने में क्या दिक्कत है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जहां जहां पे स्टॉक स्टेटमेंट आई हैं, जहां जहां पे स्टॉक स्टेटमेंट फीड किए गए, पहली तो अगर फिजिकल स्टॉक स्टेटमेंट है तो उसको कभी ये कंपेयर कर लेना कि जो स्टेटमेंट उसमें फीड हुई है सीबीएस सिस्टम में वो ठीक है या नहीं है। ये तो नहीं कि वहां पे तो फिगर है 1,50,00,000 की और सीबीएस सिस्टम में 2,50,00,000 की फीड हुई हुई हो। अगर वो हुई है तो वो तो फ्रॉड ही कर रहा, बैंकर ही फ्रॉड कर रहा फिर इन दैट पर्टिकुलर केस, फिर उसको काय को छोड़ना आपने। जो ज्यादा जरूरी है वो ये है कि स्टॉक स्टेटमेंट आपके पास है, ऑडिटेड बैलेंस शीट इस साल की आपके पास नहीं है पर पिछले साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट आपके पास है, पिछले साल की स्टॉक स्टेटमेंट भी आपके पास है। अगर पिछले साल की स्टॉक स्टेटमेंट जो 31 मार्च वाली है, जो मार्च वाली स्टॉक स्टेटमेंट है, वो 31 मार्च की नहीं होगी, हो सकता है 29 मार्च की हो, 28 मार्च की हो। परंतु अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट की स्टॉक फिगर्स में, डेटर्स की फिगर्स में, क्रेडिटर्स की फिगर में और स्टॉक स्टेटमेंट की फिगर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता क्या है, ऑडिटेड बैलेंस शीट में हमेशा स्टॉक्स आपको कम मिलेंगे, डेटर्स कम मिलेंगे कंपेयर टू द स्टॉक स्टेटमेंट्स। क्रेडिटर्स उल्टा है, क्रेडिटर्स ऑडिटेड बैलेंस शीट में 2 गुना मिलेंगे, 3 गुना मिलेंगे जो आप उसने स्टॉक स्टेटमेंट में दिया हुआ, क्योंकि अगर पेड स्टॉक नहीं है तो आपकी डीपी नहीं बनती है, पेड स्टॉक होना जरूरी है। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने वाकई में ऑडिट करना है, कैश क्रेडिट का ऑडिट करना है, तो ये जरूरी है कि आप ये देखें हर सूरत में कि भाई जो मेरे को
स्टॉक स्टेटमेंट पिछले साल में दी थी, उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ कितना तल्लक है, कितनी तालमेल बनती है या नहीं बनती है। अगर वो तालमेल नहीं बनता है तो प्लीज डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, परंतु एक साल के बेसिस पे मत कर देना, क्योंकि बैंकर कहेगा यार ये तो एक पर्टिकुलर डेट को था। उस केस में जहां पे आपको ये डाउट नजर आ रहा है उससे को एक साल पहले की और बैलेंस शीट दे दो और स्टॉक स्टेटमेंट, और उसमें भी अगर वही वेरिएशन नजर आती है तो उसको फिर पीछे से एनपीए करके लाना। हो सकता है वो आपकी डाउटफुल कैटेगरी में आए और हो सकता है वो D3 कैटेगरी में सीधा चला जाए बजाय D1 या D2 कैटेगरी में जाने के। ये सब एस्पेक्ट्स बहुत जरूरी हैं देखने। These aspects are very very important to be considered. कैश क्रेडिट में रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट की प्रॉब्लम कम है, क्योंकि कैश क्रेडिट में अगर आपके पास इंटरेस्ट, अगर इतने क्रेडिट्स अकाउंट में आ रहे हैं कि इंटरेस्ट मीट आउट हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आप उसको एनपीए नहीं कर रहे हो। आप एनपीए उसको किस बेसिस पे कर रहे हो कि इसकी डीपी नहीं निकल रही है, तो उसमें इंटरेस्ट रिवर्सल नहीं होगा। इंटरेस्ट विल रिमेन वेयर एवर इट इज, बट द अकाउंट विल हैव टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए अंडर दो सर्कमस्टांसेस। जबकि टर्म लोन के अंदर अगर अकाउंट ओवर ड्यू है फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज और उसने इंटरेस्ट डेबिट किया हुआ है, जो इंटरेस्ट अनकलेक्टेड है, तो ऑन द डेट ऑफ द अकाउंट बीइंग क्लासिफाइड एज एनपीए वो इंटरेस्ट का रिवर्सल आपको करना पड़ेगा और वो पीएनएल को चार्ज करना पड़ेगा अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। परंतु एक चीज जो उन्होंने अभी कही 21 के अंदर आके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, वो ये कही कि अगर आपने किसी को मॉरेटोरियम दिया हुआ इंटरेस्ट का, पेमेंट का, कि भाई आप पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 3 साल बाद शुरू करेंगे, और वो 3 साल तक उस पर इंटरेस्ट डेबिट करते रहा पर रिकवरी नहीं हुई, उसकी रिकवरी होने का मतलब नहीं है क्योंकि मॉरेटोरियम दिया हुआ। परंतु उस 3 साल के बाद उसने फिर डिफॉल्ट किया और 90 दिन का डिफॉल्ट हो गया, जो 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट आपने डेबिट किया था, तो वो कहता है सिर्फ जो 3 साल के बाद का इंटरेस्ट डेबिट हुआ और अनकलेक्टेड है सिर्फ उसको रिवर्स करना, पहले 3 साल वाले को नहीं करना। दिस इज व्हाट यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट, क्योंकि हम लोग कई बार ये इंसिस्ट करना शुरू कर देते हैं कि वो 3 साल वाला भी जो इंटरेस्ट आपको मॉरेटोरियम में आपने डेबिट किया था उसको भी रिवर्स कर दीजिए। वो आपको रिवर्स नहीं करवाना है, आपको रिवर्स करवाना है सिर्फ वो इंटरेस्ट जो आपने चार्ज किया बियॉन्ड दी मॉरेटोरियम पीरियड इन दो सर्कमस्टांसेस। कैश क्रेडिट के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। आप अगर सैंक्शन लेटर नहीं देखेंगे ना, आप अगर अप्रेजल नहीं देखेंगे कैश क्रेडिट अकाउंट्स में, तो आप कभी भी मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, कभी भी आप सही ऑडिट नहीं कर पाएंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि सैंक्शन लेटर में यह लिखा होगा कि आपके डेटर्स की लेवल क्या होगी, आपके स्टॉक्स की लेवल क्या होगी, स्टॉक्स में भी आपके रॉ मटेरियल्स की लेवल क्या होगी, आपके फिनिश गुड्स की लेवल क्या होगी, आपके वर्क इन प्रोग्रेस की लेवल क्या होगी, आपके क्रेडिटर्स की लेवल क्या होगी। मैं आपको एक केस सुना रहा हूं, सिर्फ ये केस मैं हर साल सुनाता हूं क्योंकि इट इज वेरी डियर टू माई हार्ट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। We came across a balance sheet. It was a major account. बैंकिंग इंडस्ट्री का 1600-1700 करोड़ रुपया लगा हुआ था उस पर्टिकुलर अकाउंट में। जब उसकी बैलेंस शीट देखी तो हमने देखा कि वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर बहुत हाई है। और जब वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर बहुत हाई देखी तो हम सैंक्शन लेटर पे गए कि सैंक्शन लेटर क्या कहता है कि वर्क इन प्रोग्रेस कितना होना चाहिए। सैंक्शन लेटर कहता है कि वर्क इन प्रोग्रेस आपका 15 दिन का होना चाहिए या महीने भर का होना चाहिए। बैलेंस शीट के अंदर जो वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा था वो साल की जो टर्नओवर थी उसका 10 महीने का आ रहा था। अगर आपकी टर्नओवर सपोज कीजिए 1200 की है तो वो 1000 आ रहा था। तो ये तो नहीं हो सकता वर्क इन प्रोग्रेस। आपने उसको लेवल दिया हुआ है 1 महीने का, सपोज कीजिए आपके हिसाब से वो 100 होना चाहिए और आपने उसको 1000 के ऊपर डीपी कैलकुलेट करने को कहा हुआ। फिर हमने उनसे पूछा कि भाई आपकी एवरेज सेल रियलाइजेशन क्या है,
तो उन्होंने बोला जी हमारी एवरेज सेल रियलाइजेशन है 1300 रुपए पर केजी। तो हमने देखा वर्क इन प्रोग्रेस वाज बीइंग वैल्यूड एट 2400 रुपए पर केजी। तो आप अंदाजा लगाइए, सेल तो आप करते 1300 रुपए पर केजी पे, वर्क इन प्रोग्रेस को आप वैल्यू करते हो 2400 रुपए पर केजी पे। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद ऊपर 200 रुपए और भी खर्च करोगे या 150 रुपया खर्च करोगे, इसका मतलब जो 2600 रुपए की चीज है, क्या आप 1300 की बेच रहे हो? तो हमने बैंक से क्वेश्चन सीधा पूछा कि आर यू फंडिंग देयर लॉसेस? तो पार्टी कहती नहीं तो डीपी कैसे निकलेगी जी? हमने कहा डीपी निकालना हमारी जिम्मेवारी थोड़ी ना, डीपी तो एक्चुअल होनी चाहिए ना। आप वर्क इन प्रोग्रेस को ज्यादा वैल्यू करके अगर डीपी निकाल रहे हो, और वो भी पता नहीं कितने गुना वैल्यू करके, आपने जो स्टॉक आपको जिसपे आपको लिमिट मिलनी चाहिए 100 रुपए के ऊपर, आपने उसको 1000 करके अगर डीपी कैलकुलेट की, तो एनपी है ना अकाउंट, किसी भी सूरत में आप कैसे बच सकते हो? अगर आपको उन्होंने कहा कि डेटर्स जो है आपके 3 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, और आपने 9 महीने वाले डेटर्स भी लिए हुए फॉर द पर्पज ऑफ डीपी, तो अकाउंट एनपीए है ही है, आप बच ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। अगर उन्होंने कहा कि आपके क्रेडिटर्स का लेवल 1 महीने का होना चाहिए, और क्रेडिटर्स हो चुके हैं 3 महीने के, 4 महीने के, तो भाई 2 महीने के क्रेडिटर्स तो कम से कम घटाओगे ना फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द पेड स्टॉक्स। और अगर मैं वो नहीं कर रहा हूं ना, तो मेरी किसी तरीके से डीपी कैलकुलेशन ठीक है ही नहीं। और वो अकाउंट फिर एनपीए का जो जिस वक्त उसमें फिर एनपीए लेवल, एनपीए जब एक्चुअल बनेगा, उस वक्त फिर ऑडिटर की क्या लायबिलिटी फिक्स होगी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो दिन चले गए। वेरी वेरी फ्रेंकली फ्रेंड्स, के हम ये मानते थे कि भाई ब्रांच ऑडिटर की क्या लायबिलिटी है, तो ब्रांच ऑडिटर्स को चिट्ठियां आनी शुरू हो गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्पेक्टर्स की, पिछले सालों में आई। उसके बेसिस पे उनके अगेंस्ट एक्शन भी हुआ, उनको डिबार भी किया गया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप आरबीआई से जाके पूछ लीजिएगा, आपको ये लग रहा हो कि मैं अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ। नो, आई एम टेलिंग यू ए फैक्चुअल पोजीशन एज टू व्हाट इज हैपनिंग। तो भाई उसको जरा देखिए कि आपने करना क्या है कैश क्रेडिट अकाउंट में। और कैश क्रेडिट अकाउंट के अंदर एक और दिक्कत है, अगर आपने किसी पार्टी को एलसी फैसिलिटी दे रखी है, बैंक गारंटी फैसिलिटी दे रखी है, एलसी आपकी डिवॉल्व हो गई, ये सर्कुलर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, मैं फिर बोलूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी एलसी डिवॉल्व हो गई, आपने एलसी को कैश क्रेडिट में तो डेबिट किया नहीं, उसको एक सेपरेट अकाउंट खोला एलसी डिवॉल्व अकाउंट, उसमें जाके डेबिट कर दिया, ऐसे बैंक गारंटी को कर दिया, बैंक गारंटी इन्वोक्ड एंड पेड, सेपरेट अकाउंट में कर दिया। और उसमें क्योंकि 90 दिन पूरे नहीं हो रहे, तो खैर जी अभी तो ये एनपीए नहीं अकाउंट। आप आरबीआई ये कहता है कि जिस दिन एलसी डिवॉल्व हो, बैंक गारंटी इन्वोक और पे हो, उस दिन आप वो अमाउंट जो है उसके मेन अकाउंट में, कैश क्रेडिट अकाउंट में जाके डेबिट करेंगे, और फिर देखेंगे कि 90 दिन की इरेगुलरिटी बनती है या नहीं बनती है। और अगर फिर बनती है, then the account has to be termed as NPA under those circumstances. मेरी फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जहां जहां पे ये सेपरेट अकाउंट रखे हुए हैं बैंकों ने, एलसी डिवॉल्व अकाउंट, बैंक गारंटी इन्वोक्ड एंड पेड अकाउंट, उनको कैश क्रेडिट अकाउंट के साथ मर्ज करके फिर निकालिएगा 90 दिन की इरेगुलरिटी। और अगर नहीं निकलती है डीपी, तो फिर उसका जो भी एनपीए का आपने करना उसका एनपीए करके परे मारिए। अगर बैंक ने किसी भी पार्टी को एलसी फैसिलिटी दे रखी, यूज एंड एलसी है, माल आपने इंपोर्ट कर लिया या माल आपने परचेज कर लिया लोकल मार्केट से अगेंस्ट एलसी, माल आपके पास आ गया, एलसी आप पार्टी ने अवेल कर रखी है, जहां जहां पे फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट दोनों है, और जहां जहां पे उसने नॉन फंड बेस्ड लिमिट अवेल कर रखी है, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली जब एलसी की फैसिलिटी उसने अवेल कर रखी है फॉर द परचेज ऑफ द स्टॉक्स, तो जो एलसी का अमाउंट अवेल्ड है वो स्टॉक्स में से कम करना पड़ेगा स्टॉक स्टेटमेंट में से, क्योंकि वो पेड स्टॉक नहीं, वो तो आप ही ने फंड किया हुआ भाई, वो उसने पेमेंट कहाँ की हुई है उसकी पेमेंट तो जब करेगा तब देखेंगे।
नहीं तो बैंक की लायबिलिटी है उस डेट तक तो, क्योंकि अगर वो नहीं पे करेगा तो कौन पे करेगा इसको? बैंक पे करेगा अल्टीमेटली। तो उतने अमाउंट का स्टॉक आपको रिड्यूस करना पड़ेगा जितना उसने एफसी के अगेंस्ट खरीदा और उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं की हुई। नॉर्मली हम लोग ये देखते नहीं है और करते भी नहीं है, सम और दी अदर। देखना पड़ेगा। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। दूसरा ये कि आपके जो क्रेडिट्स हैं, आप ये कहते हो मेरी टर्नओवर है, सपोज कीजिए उसके P&L में टर्नओवर आ रही है उसकी 5 करोड़ रुपए, और कैश क्रेडिट अकाउंट में उसके जो क्रेडिट आ रहे हैं वो 50 लाख के आ रहे हैं, तो भैया बाकी 4.5 करोड़ के कहाँ गए क्रेडिट्स? किसी और बैंक में कर रहा अकाउंट ऑपरेट, करंट अकाउंट ऑपरेट कर रहा है क्या? आपने तो अलाउ कर नहीं रखा। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं कि ये अकाउंट एनपीए है। और अगर आपको ये पता लगता है कि भाई ये तो डेटर्स, यहाँ तो इसने टर्नओवर बोगस दिखाई है, या डेटर्स जो है उससे जो पेमेंट आती है किसी और अकाउंट में डाल के निकाल रहा किसी दूसरे बैंक अकाउंट से, तो भी वो फ्रॉड है। He can't commit on you that kind of a fraud so far as this particular bank is concerned. तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि जो उसके क्रेडिट्स हैं, जितनी उसकी टर्नओवर है, उसका ये तो समझ आता है कि भाई अगर आपने डेटर्स को क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रखा है, सपोज कीजिए 45 दिन का, तो आप 45 दिन के क्रेडिट पीरियड अवेल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उतने के क्रेडिट्स नहीं आएंगे, परंतु बाकी अमाउंट के क्रेडिट्स तो आपके पास आने चाहिए। और अगर वो क्रेडिट्स नहीं आ रहे, या तो वो कहीं और ऑपरेट कर रहे हैं या उसके डेटर्स बिल्डअप हो रहे हैं, इसका मतलब उसके डेटर्स की एजिंग गलत है, उसने जो दिखाई हुई है। तो कहीं ना कहीं पे आपको इन बातों पे गौर करना पड़ेगा। कैश क्रेडिट अकाउंट ही सबसे मुश्किल अकाउंट है चेक करना, वेरी फ्रेंकली। अगर आपने उसको कोई राइट शेलर है उसको फैसिलिटी दे रखी है, और राइट शेलर वाला जो है उसके यहाँ शेलिंग के लिए भी आता है पैडी, और अपनी पैडी भी है, तो जो शेलिंग के लिए पैडी आई है, जो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने दूसरे फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछा था कि जब वेयर हाउसिंग रिसीट्स के अंदर जो कच्चा आड़तिया है उसने कमीशन बेसिस पे माल रख रखा वेयर हाउस में, उसके अगेंस्ट तो डीपी नहीं मिल सकती ना किसी भी सूरत में। तो जो यहाँ पे शेलिंग के लिए माल आया है वो उसका माल नहीं है। अगर वो उसको क्लब करके आपको दे देता स्टॉक्स के अंदर तो वो डीपी बनेगी नहीं। वो शेलिंग की जो क्वांटिटी है, जो आपने शेलिंग के लिए क्वांटिटी ले रखी है किसी से, उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये आप कहां से पकड़ेंगे? अगर आप किसी राइट शेलर का P&L अकाउंट चेक कर रहे हैं और उसमें शेलिंग चार्जेस आ रहे हैं, तो ये पक्की बात है कि इसका मतलब उसके बाद शेलिंग के लिए स्टॉक्स आए हुए हैं। शेलिंग के स्टॉक्स आए होंगे तो आप पूछ लीजिए भी शेलिंग वाले स्टॉक हमें बता दीजिए अलग कितने हैं। और अगर आपके आसपास हो कोई शेलर तो उसको जाकर विजिट कर लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार कैश क्रेडिट अकाउंट में जहां पे आपको थोड़ा सा डाउट होता है ऑपरेशन में, उन अकाउंट्स को जाके विजिट कर लीजिए, उसमें किसी तरीके का कोई हर्ज नहीं है। नोबडी कैन डिनाई यू दैट अपॉर्चुनिटी टू विजिट दी क्लाइंट। और वहां पे अगर आप स्टॉक्स देख सकते हैं तो देख लीजिए क्या होगा। और अगर पार्टी ये कहती है नहीं 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 जी मेरे यहाँ भी आने की जरूरत नहीं, मेरा तो अकाउंटेंट छुट्टी पे है, जिसके पास पासवर्ड है वो अवेलेबल नहीं, तो ये मान लीजिए कि वो अकाउंट क्या हो, वो अकाउंट है नहीं, उसमें जान नहीं है किसी भी तरीके की। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्लीज लुक एट दीज पर्टिकुलर थिंग्स। कैश क्रेडिट अकाउंट में आपको ज्यादा गौर करना पड़ेगा बजाय किसी और अकाउंट के, क्योंकि कैश क्रेडिट अकाउंट में आपके पास 36 तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो आपको टर्म लोन में नहीं। टर्म लोन में आपने क्या देखना है सैंक्शन में? टर्म लोन में तो ये देखना है भाई 3 पार्टियों की कोटेशन है, एसेट आई है, एसेट आई है तो उसके बाद इनवॉइस होना चाहिए। और परंतु एक चीज आपको देखनी जरूरी है टर्म लोन के अंदर, पेमेंट डायरेक्टली आपके यहाँ से पार्टी को जानी चाहिए, पार्टी के कैश क्रेडिट अकाउंट में नहीं आएगी। जिससे उसने माल खरीदा है, जिससे उसने एसेट खरीदी है, उसको पेमेंट डायरेक्टली जानी चाहिए, तभी आपका कंट्रोल है उस एसेट के ऊपर। नहीं तो आपको यही नहीं पता कि एसेट आई है या नहीं आई है, वो एसेट आई भी है या दूसरी एसेट आ गई, आपको ये भी नहीं मालूम उस पर्टिकुलर केस में। परंतु जो आपने जिस कोटेशन के बेसिस पे जिस आपने वो दिया है, लोन दिया, उस
पार्टी को डायरेक्ट पेमेंट होगी तब आपकी तसल्ली होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो पैसे का डाइवर्जन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा बेसिकली। और जहां ये नहीं हो रहा वहां कम से कम लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में जो आप लिख सकते हो वो लिख दीजिएगा। दिस इज माय हम्बल सबमिशन टू यू। और जहां तक आपके गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स का सवाल है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स हो, किसी के भी गारंटीड लोन्स हो, स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड लोन है, नहीं आया 90 दिन तक पैसा, आप अकाउंट को एनपीए भी कर सकते हैं और उसका इंटरेस्ट रिवर्सल भी मांगेंगे। अगर यही सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड लोन है तो आप इंटरेस्ट रिवर्सल तो मांगेंगे अगर पैसा नहीं आया, परंतु आप उसको एनपीए नहीं कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि सॉवरेन गारंटी है गवर्नमेंट की। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नॉन परफॉर्मिंग नहीं बोल सकते ना किसी भी सूरत में। मतलब कि विषय कुछ भी हो, आपकी फीलिंग कुछ भी हो, परंतु आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं कर सकते। आप कांग्रेस को बिलोंग करते हो, आप बीजेपी को बिलोंग करते हो, आप किसी को बिलोंग करते हो, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट को आप नॉन परफॉर्मिंग नहीं बोल सकते। आप इंटरेस्ट दिल्ली गवर्नमेंट को भी नहीं बोल सकते, केजरीवाल को। नहीं नहीं, उसको तो बोल लेंगे, दिल्ली वाले को बोल सकते हैं, यूपी वाले को बोल सकते हैं, सबको बोल सकते हैं, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट को आप नॉन परफॉर्मिंग नहीं बोल सकते अगर उन्होंने गारंटी की हुई। सर सीजीपीएमसी वाले जो अकाउंट होते हैं उसका एक बाद में आपका मैं क्वेश्चन ले लूंगा, आप लिख दीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट गारंटीड लोन है क्या, जो मुझे देखना है। गवर्नमेंट गारंटीड ये नहीं कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुझे चिट्ठी दे दी कि वी आर विलिंग टू गिव यू द गारंटी अगेंस्ट द लोन। नो, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होना चाहिए बैंकर के बीच में, बारोर के बीच में और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। एक एग्रीमेंट बनेगा बकायदा स्टैम्प पेपर के ऊपर, और वो ये कहेंगे कि हम ये गारंटी करते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, रीपेमेंट की भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, इंटरेस्ट की भी। सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने गारंटी किया आपको 12% इंटरेस्ट, आप चार्ज करते रहे 15% इंटरेस्ट, तो वो जो 3% है ना वो गारंटीड नहीं है, वो तो लॉस एसेट ही समझिए, वो तो आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा हर सूरत में, चाहे वो कोई भी हो। और उसका प्रोविजन भी करना पड़ेगा, आप एनपीए बोलोगे नहीं बोलोगे पर वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी कितना किया हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी किया हुआ 12% इंटरेस्ट, और आप चार्ज कर रहे हो 14% इंटरेस्ट। वो गवर्नमेंट नहीं देने वाली आपको किसी भी सूरत में। और लेटर ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्रीमेंट बिटवीन द थ्री पार्टीज इज इंपॉर्टेंट ऑन ए स्टैम्प पेपर। अगर वो नहीं है तो वो गवर्नमेंट गारंटीड लोन नहीं है, फिर उस पर जो नॉर्मल कंडीशंस अप्लाई होंगी वो कंडीशंस अप्लाई होंगी। एक और अकाउंट है जो एनपीए नहीं होते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिकवरी ऑफ द इंटरेस्ट। जो लोन्स आप एनएससीज के अगेंस्ट देते हैं, जो लोन्स आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट देते हैं, जो लोन्स आप एलआईसी पॉलिसीज के अगेंस्ट देते हैं, अगर उनमें एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है आपके पास इंटरेस्ट डेबिट करने के बाद, तो वो अकाउंट एनपीए नहीं होगा। हाँ, जिस दिन वो मार्जिन खत्म हो जाएगा, इसीलिए बैंक क्या करता, बैंक मार्जिन रखता। फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन देना तो भी 90%, 80%, 75% का ही लोन देता, क्योंकि वो भी तो इंटरेस्ट चार्ज करता रहता है ना फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, आपके भी तो बढ़ता रहता है उसका अमाउंट। अगर वो आपसे यहाँ पे 2% फालतू इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो वहां पे वो इंटरेस्ट दे भी रहा, तो मार्जिन इसलिए कम नहीं होता। सिमिलरली एलआईसी पॉलिसीज के अगेंस्ट, सिमिलरली एनएससीज के अगेंस्ट, वहां पे वो वैल्यू बढ़ती रहती है, इसलिए वो मार्जिन कम नहीं होता। परंतु जिस दिन मार्जिन खत्म हो गया उस दिन आपको वो अकाउंट एनपीए करना पड़ेगा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी कुंतल साहब बता के गए कुछ चीज के फ्रॉड किस तरीके से वो फिक्स डिपॉजिट लोन में लियन मार्क इस पे किया हुआ था। उन्होंने बड़ा एक जबरदस्त मॉडस ऑपरेंडी बताई। उन्होंने ये कहा कि अभी लियन मार्क था, आपने उसके अगेंस्ट ही किसी एक और लोन दे दिया, उसकी फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर ली, उस पर लियन नहीं था जिसपे आपने दोबारा क्रिएट किया,
जो फिक्स डिपॉजिट दोबारा क्रिएट किया आफ्टर डूइंग दी लोन, उसमें लोन नहीं था तो आपने साइफन ऑफ कर दिया या जो भी किया वो अलग बात है। आपको सबसे बड़ी चीज इन लोन में ये देखनी है कि जो लियन मार्क का प्रोसीजर है वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ। LIC पॉलिसीज को आप बाई हैंड जाके लियन मार्क नहीं करवाते। LIC पॉलिसीज के लिए बकायदा एक्नॉलेजमेंट थ्रू द रजिस्टर्ड आईडी, थ्रू द स्पीड पोस्ट वगैरह जाके वो जाती है, वापिस आती है उसी तरीके से, क्योंकि नहीं तो ये पता ही नहीं कि LIC पॉलिसी LIC को गई या किसी और को चली गई, और किसने स्टैम्प मार के उस पर साइन करके आपको लियन मार्क करके दे दिए। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू लुक एट इट। अब एक और लोन है जिसमें हम सब लोग ये समझते हैं यार गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन के का NPA थोड़ी ना होगा गोल्ड लोन। मैं आपको यहां तक बता सकता हूं कि मैंने डिस्कसिंग दिस मैटर विद, हमारी कंटेंशन ये थी कि NPA होना चाहिए, क्योंकि बैंक वाले क्या करते हैं गोल्ड लोन में भी वही करते हैं जो एग्रीकल्चरल एडवांसेस में करते हैं। Basically, what is happening is either the cash is received and cash is paid the same day. Agriculture loan में यही होता साल के आखिर में, आपको पता सबको। गोल्ड लोन में भी क्लोज कर देते हैं उस लोन को, नया लोन दे देते हैं। Wherever it is happening, it is a danger mark. कभी RBI ने 4 दिन पहले ही बोला गोल्ड लोन्स के अगेंस्ट काफी कुछ, कि गोल्ड लोन्स की वेरिफिकेशन करना स्ट्रिंजेंटली बहुत जरूरी है। और पहले तो ये भी नहीं पता होता था कि गोल्ड दे गया तो या ब्रास दे गया। अब उसमें एक बात का ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास किसी गोल्ड स्मिथ की रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए अप्रूव्ड वैल्यूअर की, गोल्ड कंटेंट कितना है। और अगर आज की डेट में प्राइस फॉल कर जाए गोल्ड का तो DP उसके हिसाब से ही निकलेगी ना। सपोज कीजिए आपने कहा गोल्ड कंटेंट इसमें है 60 ग्राम, 60 ग्राम का रेट था पहले 10 ग्राम का 60,000 रुपया, अगर आज की डेट में 50,000 हो गया तो DP तो 50,000 के बेसिस पे निकलेगी। वो 60,000 लगा के चल रहा और आपको पता है कि आज का रेट 50,000 है। अगर तो बढ़ जाएगा तो वो बढ़ा देगा, वो कहेगा ठीक है जी ये 60,000 की जगह 65,000 हो गए तो DP अब 65,000 के बेसिस पे निकल रही तो मेरा अकाउंट ठीक चल रहा। परंतु अगर 50,000 हो जाएगा तो वो नहीं बोलेगा, उसको जरा देख के चलिएगा। और गोल्ड लोन्स NPA होंगे उन पर वही प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे जो बाकी किसी अकाउंट पे होंगे। गोल्ड लोन ऐसा नहीं है कि NPA नहीं हो सकते, गोल्ड लोन वैसे ही NPA होंगे जैसे कोई और लोन NPA होता। मुझे बहुत खुशी हुई जब किसी ने वेयर हाउसिंग रिसीट्स वाला क्वेश्चन रेज किया, क्योंकि पिछले साल वी फेस द सेम प्रॉब्लम समवेयर एंड वी हैड टू कैटेगराइज few loans as the as the NPAs in those cases. That was a very good question basically. Now in the case of gold loans also, there had been a feeling earlier कि यार गोल्ड लोन NPA थोड़ी ना करना, गोल्ड पड़ा है ना मेरे पास, अरे गोल्ड पड़ा अगर कल प्राइस फॉल कर जाएगा तो क्या होगा, DP नहीं निकलेगी। फिर गोल्ड लोन में जो रिकवरी होनी चाहिए, इंटरेस्ट की रिकवरी होनी चाहिए, वो बिल्कुल रेगुलर कोर्स में होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो अकाउंट को आपको NPA क्लासिफाई करना ही पड़ेगा अंडर दो सर्कमस्टांसेस। ये बात को बिल्कुल आप मान के चलिएगा so far as this particular point is concerned. Another thing that one will like to say is with regard to bills. दो तरीके के बिल्स हैं, साइट बिल्स हैं, यूजेंस बिल्स हैं। साइट बिल्स कौन से हैं? साइट बिल्स वो हैं जो पार्टी ने ये एक्सेप्ट किया है कि आपसे बिल डिस्काउंट करवा रही है, परंतु जैसे ही दूसरी पार्टी को आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तब देंगे जब वो पार्टी आपको पेमेंट कर देगी बैंक को, जो भी आपका काउंटर बैंक है। और यूजेंस बिल में ये है कि पार्टी एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट्स ले जाएगी कि भाई मैं आपको पेमेंट 30 दिन के बाद, 90 दिन के बाद, 45 दिन के बाद, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बाद करूंगी। जहां तक तो यूजेंस बिल का सवाल है मुझे दिक्कत नहीं है,
45 दिन की उसने पेमेंट डॉक्यूमेंट ले गया, मैं उसने साइन करके दिए, वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, माल को लेके चला गया। हाँ, 45 दिन के बाद फिर अगर नहीं आएगा और 90 दिन पूरे हो जाएंगे तो मैं एनपीए कर दूंगा अकाउंट। पर अगर साइट बिल है और मैंने ये देखा कि मैंने डिस्काउंट किया था इन द मंथ ऑफ जनवरी, मार्च तक वो बिल की पेमेंट नहीं आई है, और आप ये कह रहे हो कि माल तो अभी उसने छुड़वाया नहीं। अरे दिल्ली से लुधियाना माल गया, या दिल्ली से अमृतसर माल हमने भेज दिया गौरव जी को, बठिंडा भेज दिया राम बंसल जी को, भाई 2 दिन में पहुंच जाएगा, 3 दिन में पहुंच जाएगा, 4 दिन में पहुंच जाएगा, हफ्ते भर बाद वो छुड़वा लेगा। 3 महीने थोड़ी ना रखेगा। he has not purchased the material for payment of demurrage। उसने इसलिए माल नहीं खरीदा कि उसने डेमरेज पे करना है इसके ऊपर, उसने माल खरीदा क्योंकि उसने उसको यूज करना है। अगर आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जहां पे साइड बिल आउटस्टैंडिंग है फॉर ए मंथ, 2 months, 3 months, ये समझ लीजिए कि पार्टी माल छुड़वा के ले गई, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो ले गई उससे पार्टी। अगर आप ये कहेंगे ना मैं ये माल वेरीफाई करना चाहता हूं, तो बैंक मैनेजर आपको करने नहीं देगा, वो फ्रॉड है। इट इज अ फ्रॉड, इट इज नॉट इवन एनपीए। The account has to be directly taken to the doubtful category, not even to the substandard category। क्योंकि पार्टी माल निकाल के लगी, वो कहते हैं ये तो स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस है सर, ये तो होता ही है सर, पार्टी मेरी सोने जैसी है, पेमेंट मुझे हमेशा कर जाती 6 महीने बाद, आपको पेमेंट करती होगी। मेरे लिए टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि इट्स अ साइड बिल, और आप उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तब दोगे जब वो आपको पेमेंट कर देगा। वो डॉक्यूमेंट लेके चला गया, उसने माल बेच दिया, खा गया, और 6 महीने तक मेरी पेमेंट नहीं कर रहा, और मैं कह रहा हूं कि जी मेरी पार्टी सोने जैसी, मेरे लिए तो मिट्टी जैसी भी नहीं। So what I am trying to say is, please be careful so far as this bills part is concerned under all circumstances। सर एक क्वेश्चन था गोल्ड लोन के रिगार्डिंग, सर ले सकते हैं? हाँ जी, बोलिए। सर गोल्ड लोन में आजकल कुछ बैंक्स ने मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफर किया है ऑडिटर्स को, कुछ बैंक्स ने। तो सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे जैसे कोई बड़े गोल्ड लोन भी होते हैं ब्रांचेस में स्टैट ऑडिट में, तो क्या सर उसमें वी कैन इंसिस्ट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन बिकॉज इन सम ऑफ द साउथ बेस्ड कर सकते हो, 100% कर सकते हो सर कस्टमर और कोई प्रेजेंस मैंडेटरी। आप ये भी कह सकते हो कि वी विल लाइक दी gold to be verified by a certified jeweler, you can insist on it, क्योंकि सर nobody can refuse you that जी, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर सर। हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर नेचुरली। देखिए गोल्ड को हमेशा टच करना होगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर ही करिएगा, वैसे मत करिएगा किसी भी सूरत में, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। वेरी, क्योंकि बैंक मैनेजर बाद में ले जाए निकाल के कह दी ऑडिटर ही लेना होगा, ये उसने वेरीफाई किया था, तो वो रिस्क मत लेना, और साइन वहीं पे करवाना पार्टी के भी, और उसमें ये भी लिखवा देना कि इट हैज बीन फर्दर पुट इनटू द लॉकर, लॉक जो भी है, लॉक एंड की, वो बहुत जरूरी है। एनी अदर क्वेश्चन? किसी ने पहले कोई क्वेश्चन पूछा था, ये मैं पढ़ ही देता हूँ क्वेश्चन। देयर इज सीसी लिमिट ओनली कैश डिपॉजिट टू रीपे द सीसी, देयर इज नो सेल परचेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है, सीसी लिमिट किस लिए है? सीसी लिमिट तो तभी होगी अगर आप परचेज सेल कर रहे हैं, नहीं तो सीसी लिमिट कैंसिल होनी चाहिए। व्हाई शुड बी सीसी लिमिट अपीयर? अगर आपकी परचेज सेल है ही नहीं तो आपने सीसी लिमिट दे किस लिए रखी है? देन योर रिकमेंडेशन शुड बी दैट ओनली कैश इज बीइंग डिपॉजिटेड। होता क्या, मैं आपको बता दूं, आपका जो क्वेश्चन है ना, आपने थोड़ा सा अधूरा पूछा मुझसे। इसमें होता ये है कि 4 बार डेबिट होता है इंटरेस्ट 4 क्वार्टर में, और 4 बार कैश आ जाता है उसके अंदर। दिस इज नॉट, इट इज अ डोरमेंट सीसी अकाउंट बेसिकली। सीसी you don't give only for the purpose of earning the interest, CC you give for the purpose of making sure that there is a purchase and sale। इस केस में आप उनसे ये बोलो कि जो आपने सीसी लिमिट दी हुई थी, इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसकी दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत ये है, आपने उसको सीसी लिमिट दे दी, उसने तो टर्म लोन बना लिया इसको, वो एक बार ले गया आपसे पैसा, इट इज नॉट ए टर्म लोन ना,
ना तो आपको वो रीपे कर रहा है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहा है, ना तो आपकी प्रिंसिपल रीपे हो रही है। एंड सीसी अकाउंट इज सपोज्ड टू बी लिक्विडेटेड एटलीस्ट वंस इन एन ईयर। एक बार तो कम से कम जीरो हो कहीं पे, उसके क्रेडिट्स वगैरह से होता ही नहीं है, तो ये नहीं चल सकता। Such accounts you can say that these are sticky accounts and accordingly can be classified as NPS, because this is not temporary deficiency, it's a permanent deficiency in the account for that matter. दूसरा है, in case of gold term loan, loan sanction credited to a saving account and old loan, no, it cannot be done. Prudential norms are very clear. You cannot square off a loan by granting a new loan to the party. आप गोल्ड लोन बाद में दे लो, पहले एक बार तो अपना कैश लेके आओ। बैंक अपना पैसा देके ही उसको लोन क्रिएट करेगा, तो कैसे बात बनेगी फिर? तो मैं ये कहूंगा कि पहले लोन के अगेंस्ट भी तो कोई सिक्योरिटी होगी ना, किसी ना किसी कलेक्टरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया ही होगा वो, या कोई प्राइमरी सिक्योरिटी होगी। अगर आप सिक्योरिटी ही क्रिएट करना चाहते थे तो उसमें दे देता गोल्ड की और सिक्योरिटी, अगर आपने एनपीए नहीं करना था। तो यू कैन नॉट गिव ए लोन टू स्क्वेयर ऑफ योर एनपीए लोन or to square off your irregularity for that matter. Loan amount 25 lakh mostly, and interest is regularly served, but in the financial sale it is rupees 95 lakh, in which category account is, मैं समझा नहीं है बात। अगर सेल उसकी 95 लाख की है, लोन अमाउंट सिर्फ 25 लाख ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इट इज टर्न ओवर 4 times बेसिकली। अगर एक जो आपकी लोन की कैश क्रेडिट को अगर आप 4 बार टर्न कर रहे हो, अगर आपकी सेल उसके 4 गुना है, then there is absolutely no problem if the interest is being serviced, and of course if there are credits in the account for that matter. Whether bank can assume creditors in sanction or renewal so that DP becomes adequate in the account. बैंक कैन एज्यूम क्रेडिटर्स क्या मतलब है? बैंक जिस वक्त सैंक्शन करता है उस वक्त प्रोजेक्शन में होता है कि क्रेडिटर्स का क्या लेवल होगा, और वो क्रेडिटर्स का लेवल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर क्रेडिटर्स से ऊपर जाते हैं तो वो फिर स्टॉक्स में से घटेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द पेड स्टॉक एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द डीपी। दैट्स वेरी वेरी क्लियर। सर सीजीटी एमएससी अकाउंट के बारे में, इसके सीजीटी एमएससी अकाउंट जो सेंट्रल गारंटेड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सेंट्रली गारंटेड, हाँ जी, ऐसा उसका टेन्योर तो है। अगर उसका टेन्योर खत्म हो गया उसके बाद भी नहीं आ रहा तो जो आपने करना करें, क्या दिक्कत है? नहीं सर, सीजीटी एमएससी के अंदर सीसी लिमिट टाइप जैसे दिए होते हैं ना आजकल बैंक्स ने, तो उस केस में भी जैसे मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सर सीजीटी एमएससी स्कीम के अंदर भी वो लिमिट्स वगैरह दी होती है ना बैंक्स ने आजकल, तो लिमिट तो एज ए सीसी लिमिट रेगुलर दी होती है, लेकिन वो 2 या 2.5% जो एनुअली चार्ज लेते हैं एक्स्ट्रा पे करते हैं एज ए इंश्योरेंस चार्जेस, लेकिन उस केस में एनपीए करने के लिए फिर उसका कोई क्या क्राइटेरिया हो जाए? एनपीए करने का क्राइटेरिया वही है जो बाकी अकाउंट्स का है उसमें। नहीं, इसको जैसे आप कह रहे थे ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी वाले हैं कुछ है उस ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ दो यार, उसकी क्या है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। उन्होंने भी एक पर्टिकुलर पीरियड में दी थी सीजीएसएमएसटी, दैट वाज द कोविड पीरियड। उसके बाद कितनी देर तक वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है उसको आप स्टडी कर लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि एमएसएमई में कि ये लाइफ टाइम गारंटी रहेगी मेरी। उस वक्त कोविड के पीरियड में ये गारंटी दी गई थी, उसके बाद एक पीरियड के बाद दे हैव टू कम इनटू ऑपरेशन देमसेल्व्स आल्सो। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो पढ़ लीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली लाइफ टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, परंतु अगर लाइफ टाइम नहीं है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और अगर वो सीजीएमएसएमई है भी फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, अगर मैं ये बोलूं, अगर आप ये कहते हो कि लाइफ टाइम भी है, अगर उसमें ऑपरेशन नहीं है अकाउंट में, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड भी है तो भी इंटरेस्ट तो रिवर्सल मांगना ही पड़ेगा आपको। आप एनपीए नहीं करोगे उसको सिर्फ। ठीक है। हाँ, आप ऑपरेशन, आप अगर उसमें ऑपरेशन नहीं हो रहा या वो पेमेंट नहीं कर रहा जो इंटरेस्ट उसको सर्विस करना चाहिए, then also the account may not be termed as NPA, but the interest reversal will definitely take place. ओके सर, वो आप नहीं रोक सकते। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। अब
मेरे ख्याल में अश्विनी जी जो मोटा मोटा था मैंने अकाउंट्स का इसका वो बता दिया। हेलो अश्विनी जी। हाँ जी सर। मैंने मोटा मोटा बता दिया, मैं एक बाकी मिनट किसी ने और कुछ पूछना हो तो पूछ लें। सर उतने क्वेश्चन आप पूछिए, मैं गुरुजी को पूछूंगा, अगर अवेलेबल है, नहीं तो फिर दोबारा ही करना पड़ेगा उनका। हाँ दोबारा कर लेंगे कभी, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जाना था, अगर आपको कोई पता क्वेश्चन सर आता ना सरिया जी का, मैं कर रहा हूँ अलाउ। हाँ जी सर। हाँ जी सर पूछिए हाँ जी। इन्होंने ये पूछा है एजुकेशन लोन वर्सेस भी एक्सप्लेन कर दो सर प्लीज। मैं बता देता हूँ। एजुकेशन लोन बड़ी भारी संख्या में एनपीए हुए हैं पिछले दिनों में। उसमें आपको दो तीन चीजें देख लेना। एक तो यह है कि अगर एजुकेशनल लोन सपोज कीजिए 3 साल का था, कि उसने 3 साल की डिग्री लेनी थी, 3 साल बाद उसे डिग्री मिलनी थी, और उसने पहली इंस्टॉलमेंट ली और बाकी 2 इंस्टॉलमेंट ली नहीं, तो इसका मतलब उसने अपनी डिग्री पूरी की नहीं। सिंपल सी बात है ना, तो आप मानोगे कि अगर किसी बच्चे ने ये कहा कि मेरा 3 साल का कोर्स है और पहले साल की इंस्टॉलमेंट ले ली और 3 साल हो चुके हैं और वो पेमेंट कर नहीं रहा अभी, मतलब कि पेमेंट उसने और बाकी 2 इंस्टॉलमेंट जो लेनी थी वो लेनी, इसका मतलब उसने अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ दी है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जब कभी बच्चा एजुकेशनल लोन के लिए आए, जिस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लोन की वो लेके आएगी कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके बैंक मैनेजर ने ये फीस वेरीफाई की या नहीं की कि इतनी ही फीस है उसकी। आप उसकी स्टे नहीं फंड करते हो, आप उसकी एजुकेशन फंड करते हो सिर्फ वहां पे, बाहर जाने के लिए भी। या एमबीए में भी अगर आपने उसको देना है तो एमबीए की एजुकेशनल फीस आप उसकी फंड करते हो, यू डोंट fund the other positions in that particular case. If he is not repaying it in time, whenever he is supposed to repay, in that particular case the account will become NPA. In any case, I am repeating again, अगर उसने कोर्स बीच में छोड़ दिया है, और अगर आप ये समझ सकते हो और जान सकते हो, उस केस में वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। सीसी अकाउंट हैज रिमेन्ड इन excess of DP for 90 days on 31/12/23, but balance has remained within DP. यार ये कैसे हो सकता? CC account has remained in excess of DP for 90 days, but balance has remained within DP at the end of the year. ठीक है, छोड़ दीजिए। हालांकि अगर आप मेरे से सही मानों में पूछो तो 31 दिसंबर को अकाउंट एनपीए हो जाएगा, परंतु अगर उसके बाद ठीक रहता है अकाउंट, then the account will be treated as performing, no issue so far as this particular part is concerned. This was by Neha Jain. Kindly put some light on SBI electoral bonds. यार मैंने पहले मदन लाल लिमिटेड का एग्जांपल दे दिया आपको, अब मेरे से इससे ज्यादा मत कहलवाओ, इससे ज्यादा मेरे से मत कहलवाओ। एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर आपने देखा होगा एटलीस्ट 5 पार्टीज ऐसी हैं जिनके यहाँ जिस दिन रेड हुई थी उसके 5-4 दिन में उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे। अगर आज रेड हुई है तो 5 दिन के अंदर उसने बेचारा ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद लिए। अब एसबीआई इसमें क्या करेगा यार? एसबीआई ने लोन थोड़ी ना दिया इनको, एसबीआई उन्होंने परचेज किए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, उन्होंने ले लिए। उन्होंने किसको दिए किसको मालूम है, ये स्टेट गवर्नमेंट को दिए या सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए वो उनको पता होगा। छोटी पार्टीज को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स गए और बड़ी पार्टीज को भी गए, दोनों को गए। पर मुझे हैरानगी ये हुई है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है वो प्रेसिडेंट सो एंड सो के नाम में गए, बाकियों में तो पार्टी के नाम से गए। एक पर्टिकुलर पार्टी के केस में प्रेसिडेंट के उससे गए, प्रेसिडेंट सो एंड सो। मुझे वो बात समझ नहीं आई। Normally it should be in the name of the party. The account is in the name of the party. The account is not in the name of the president. But it has gone that way also. अब इसमें आप कंपनी के ऑडिट में देखेंगे, बैंक ऑडिट में आपने इसमें कुछ नहीं देखना। डोंट वरी अबाउट द बैंक ऑडिट सो फार एज दिस पॉइंट इज कंसर्न्ड। इसको आप देखना जब आप कंपनी का ऑडिट करोगे कि कौन कौन सी कंपनी ने खरीदा और कहां पे अदर एक्सपेंसेस में डाला।
वो तो कैश में खरीदे हुए हैं सर, वो तो इलेक्ट्रल बॉन्ड तो कैश में खरीदे हुए हैं। कैश में नहीं खरीदे हुए, कैश सबने चेक से खरीदे हुए भाई। अच्छा अच्छा। अगर कैश से खरीदे होते तो फिर कैश ही ना दे दे, तो फिर क्या दिक्कत। ले फिर ब्लैक मनी ये जो कहाँ से आ मदन गया, ये लाल कैसे आ लिमिटेड गए का हैं मैंने ब्लैक आपको मनी केस में? बताया, जो मैंने आपको मदन लाल लिमिटेड का केस बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। उसकी टर्नओवर 21, क्या बैलेंस शीट निकाल लीजिए, उसकी एनुअल रिपोर्ट है, उसकी टर्नओवर है 296 करोड़। तो टर्नओवर उसकी 296 करोड़, और 280 करोड़ का उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मेरे से। वो कंपनी के केस में ही देखोगे ना, और उसको अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया उसने, मर्ज कर दिया। आप ये समझो कि 296 करोड़ की टर्नओवर के अगेंस्ट खर्चा कुछ नहीं है। टर्नओवर होगी तो खर्चा तो होना चाहिए ना। 5 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया उसके बाद। सर वो टर्नओवर भी ऐसे ही होगी, दैट वाज उसके 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 अगले साल उसकी टर्नओवर जीरो है, उसके पिछले सालों में भी जीरो है, मोर और लेस। तो ये शेल कंपनीज नहीं है, ये क्या है। एनीवे, लेट मी नॉट गेट इनटू दीस डिटेल्स। I think I may do some interview तो at सर a particular point of time. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, दोनों चीज़ां नहीं है। एनीवे, गॉड ब्लेस एवरीवन। और मैं ये समझता हूँ ये पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, इसको जो चल रहा वो चल रहा। ये तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डिस्क्लोज कर दो, क्या हुआ, इससे कुछ नहीं होना। इससे रेवेन्यू एजेंसी पे और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे प्रेशर बनेगा, ये मैं आपको बता दूं। कुछ नहीं होना इससे, और कुछ। हमारे जैसे लोग ये पूछ सकते हैं ना कि भाई मदन लाल लिमिटेड को अब क्यों नहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देख रही। हम जैसे लोग पूछेंगे ये क्वेश्चन, तो उससे भी तो पूछो कि 296 में से 280 करोड़ की कौन डोनेशन दे सकता है यार। कहां से जस्टिफाई होती। आप इंडिविजुअल से पूछ लेते हो कि तेरी सैलरी तो थी 5,000, तूने 250 रुपए की डोनेशन क्यों दी। 296 के 280 करोड़ की डोनेशन है यार, उससे भी पूछो ना। Anyway, let's not get into this. चलो मेरे ख्याल ओके में अश्विनी जी, फिर आपके साथ किसी दिन करेंगे, फिर हाँ करेंगे जी सर, किसी गुरु दिन जी उसमें। फोन नहीं उठा रहे, मेरे ख्याल में एमएसएमई वाला रह ही जाएगा आज। गुड इवनिंग सर, चलो, गुड इवनिंग सर, स्मॉल क्वेश्चन सर। हाँ जी हाँ जी, सर नीलकांत सर, सर प्रणाम सर। हेलो हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग, नीलकांत बोल रहे हैं सर। सर स्मॉल क्वेश्चन सर, जैसे अकाउंट को इधर बोलो ना। जून के क्वार्टर में थी, जैसे मतलब इंटरेस्ट 3 महीने क्या का चीज? सर्विस नहीं हुआ, जून के क्वार्टर में 3 महीने का इंटरेस्ट सर्विस में, फॉर एग्जांपल सितंबर में नहीं हुआ, तो बैंक ने उसके एनपीए नहीं हाँ किया, जी, बाद में वो रेगुलर हो गया। करना पड़ेगा बॉस, करना पड़ेगा। यही तो बात है। जून भाई ऐसा है, बैंकिंग इंडस्ट्री इज सपोज्ड टू नो कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द एनपीए। आप अगले क्वार्टर में जाके रेगुलराइज हो गया, आपने उसको निकाल दिया उसमें से, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। परंतु जिस डेट को एनपीए है उस डेट को एनपीए करना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। वी हैव टू चेक दैट आल्सो। ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। चलो सर, गुरु जी लगता है अभी मंदिर में बिजी हैं उज्जैन में। चलो अगली बार उनको बुलाएंगे दोबारा एमएसएमई पे। तो चलो संजय जी भी आ गए हैं। चलो थैंक अश्विनी यू जी, वेरी मच सर। मैं भी भागने के मूड में हूँ। अभी मेरी फर्स्ट नहीं पार्ट, तो ग्रस्त जीवन खतरे में है। अच्छा जी सर। चलो सर, थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो थैंक गया यू। हमारा बैंक ऑडिट के ऊपर। अभी सेकंड और थर्ड हम्म, फेज में फिर आपसे और अलग अलग फैकल्टी से जुड़ेंगे, ताकि मेंबर्स जिनको भी ऑडिट आता है स्टैट्यूटरी, और जो कंकरेंट को इफेक्टिवली करना चाहते हैं, वो इसका बेनिफिट और लाभ ले सकें, और हमारे प्रोफेशन में ऑडिट बना रहे। इसके लिए चोपड़ा जी के तो प्रयास रहते ही हैं, हमें भी प्रयास करने पड़ेंगे ताकि हम इफेक्टिव ढंग से ऑडिट करें। और वॉइस ऑफ सीए की बाकी भी हम आने वाले टाइम में एक्टिविटीज जैसे संजय भाई ने बताया वो करते रहेंगे। और मतलब अभी इलेक्शनों का आगाज हो गया है। मैंने मैसेज भी डाल दिया कि 7 चरणों में इलेक्शन हो रहे हैं। अभी आप एंजॉय कीजिए, जो इलेक्शन ईयर है,
अमित शाह जी ने भी कहा है कि मैक्सिमम कंट्रीज में इलेक्शन हो रहे हैं, रादर हमारे इंस्टीट्यूट के भी इलेक्शन हो रहे हैं। इस बार इलेक्शन माहौल है, तो अब इलेक्शन माहौल में ही हमने रहना है पूरा साल, तो दिसंबर तक ये मोमेंटम बना के ये है, खाना पीना फ्री मिलेगा, लंच डिनर शुरू हो जाएंगे, वोटर की ऐश है। संजय जी भूलना मत हमें लंच डिनर के लिए यार। सर बात ये है कि जब कुछ होगा तो सबको होगा, ये जो आएगा पाएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं पाएगा। नहीं पाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सर। चलो, आएगा पाएगा वाली बात तो अलग है, पर ना आने वाला भी वोट वहीं दे के जाएगा जहाँ उसने देना। ये भी पक्की बात है। बिल्कुल पक्का है जी। चलो, इसलिए हम ये काम करते रहते हैं, सबको प्यार से सबकी क्वेरी सॉल्व करते हैं, सब लोगों को जो है वो जहाँ जो प्रोफेशन में हो सकता है उसकी कोशिश करते हैं सर। गौरव जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करिए। सर थैंक यू सो मच। चोपड़ा जी को सुनना हमेशा ही एक वंस इन ए हेवन टाइम अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि सर जो चीजें बताते हैं वो बिल्कुल अप टू द मार्क एंड जस्ट टू बी कंक्लूसिव रहती हैं एवरी टाइम। कई बारी सर को फिजिकली सुनने का मौका मिला है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है वोका का प्लेटफॉर्म, ऑलवेज दे पीपल आर ऑन द फ्रंट टू प्रोवाइड ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एवरी लिसनर, और वो इन टाइम रहती है और बड़ी फ्रूटफुल रहती है हर चीज के लिए। इन शब्दों के साथ मैं चोपड़ा जी का बहुत बहुत शुक्रिया और संजय जी का हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। थैंक्स टू ऑल द वोका टीम एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर स्पेयरिंग देयर वैल्यूएबल टाइम एंड जॉइनिंग अस ऑन दिस इवेंट। थैंक यू सो मच सर। कुंतल साहब का भी सर, उनका भी एब्सेंस किया। और सर की कुंतल शाह जी पीपीटी सर हेल्पफुल रहती है जी। पीपीटीज मैंने ना शेयर कर दी है ग्रुपों में, बाकी वॉइस ऑफ सीए की तरफ से भी आपको सबको आ जाएंगी लिंक में, मैंने शेयर कर दी है। Stay healthy. Good night.